Hello, check. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Check, hello. 1, 2, check. Microphone testing. Hello. Sound check, check, check. Hello, hello, check,
check 1 2 3 check. Hello, hello. Check sound. Hello. Microphone testing. Hello. Check. Check sound. Hello. Hello. Check sound. Hello. Microphone testing. 1 2 check. Check. Hello. Hello. Check sound. Hello. Hello. Check. 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 Hello. 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 Check. Check. Hello. Check sound. Hello. Microphone testing. Hello. Hello. Check. Check. Hello. Hello. Check. Check. Hello. Hello. Check. Check sound. Hello. Microphone testing. Hello. Check. Check one. Hello. Check two. Hello. Hello. 1 2 check. Sound check. Hello. Check. Hello. Check sound. Hello. Hello. Check sound. Hello. 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 Check.
check, hello. Microphone testing, sound check, sound, hello. Recording check.
check sound. Hello. આવી જાય.
Hi, good morning, everyone. If we have the permission, can we start the proceedings? May I request our honorable guest to be on the dais? May I request Dr. Renu Srivastava Verma, ma'am, please, can you be? Dr. Rinku Srivastava, please, ma'am. And Dr. Prajapati, Dr. N.C. Prajapati, please, can you be? May I request Dr. Devendra Khandat to please join us on the dais, please. Sir. Hi, may I humbly request everybody to be seated, please? Humbly requesting everybody to be seated, please. Hi, good morning, everyone. It's an absolute pleasure and honor to welcome you all. And I take this privilege to honor our guests on the dais. Respected Dr. Renu Srivastava, Director of Director of Health and Family Welfare. It's a pleasure to also honor to welcome Dr. Rinku Srivastava, GM Family Planning, NHM. It's an absolute pleasure and honor to also welcome Dr. N.C. Prajapati, Assistant Director General, Medical Education. And as always, absolute pleasure to welcome our friend and mentor, Dr. Devendra Khandat, from Deputy Director from Bill Melinda Gates Foundation. As is customary always, and which we must follow, can we start with lighting of the lamp, ma'am, please? Right? Can you come, ma'am, please? Come. Can I get the candle? शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु देवा
So, welcome to this half-day consultative workshop on youth at the center of family planning program in state of Uttar Pradesh. It's my pleasure to welcome you all dignitaries and friends and colleagues and experts from the state of Uttar Pradesh, and also welcome to the 3 young youth participants who are here with us to share their thoughts. So let me begin with saying Uttar Pradesh as a state has made some tremendous strides in improving its maternal child health and various women health and development indices, as is very well reflected in the NFHS 5 data. I'm sure we all shall continue to strive for better than what we have achieved. There are various factors which influence contraceptive uptake, especially the modern contraceptive uptakes. Issues like child marriages, gender-based violence, a women's addition and capabilities on contraceptive use and choice for birthing. Early interventions in late adolescence and in preconceptual period, that is married but not pregnant or with just 1 child. That is called the young low priority couples, improves uptake of modern contraceptions, which hence reflects on women's overall health and well-being. It's very well recognized that the women's health and well-being is going to be a significant contributor to the 1 trillion economy that the state envisages to achieve, and has been very well stated by the Honorable Chief Minister Yogi Ji. With this backdrop, let me put the context setting for this meeting, right, which is around some of the thematic areas that needs to be addressed as we move further. Can we get into the presentation, please? Okay, first slide, please. Very well reflected in this slide that if you compare the NFHS 5 data with NFHS 4 data, you would see this startling change that we were talking about. Look at MCPR, right? NFHS 4 and NFHS 5. Just look at the unmet need, what has changed, and percentage of demand satisfied by modern methods is well reflected in the figures of NFHS 5 for the state of Uttar Pradesh. In last 6 to 7 years, it seems to have made a significant stride and change in the figures and data, as is reflected by NFHS 5 compared with what we see in the NFHS 4. Let's get to the next slide. Now, when we get to age specific, right? And if you look at 15 to 24 and you look at 25 to 49, that's where it hits you that this is something which we need to invest much more. And we need to invest much more because the evidence is telling us that we need to invest much more. If you look at the total unmet need in 15 to 24, it's 18.6 as compared to 25 to 49, which is 11.7. If you look at MCPR, you look at 15 to 24, you are at 27.6, and in the older age group, you are at 47.9. This is just not to throw data on you, it's just to say the evidence says that this is the particular age group which we need to harness more and work more. Based on what's available and what's available in the literature and what's our institutional understanding for working with young people for more than 2.5 decades and with young low parity couples. The next slide, please. There are some obvious areas of strengthening. Simple thing like youth access. Young people usually don't like to go to services. Young married couples
are constrained to access services because of various reasons. So we need to get to them rather than getting them to services. We need to get to them and then get them to services, which means strengthening your outreach. And outreach strengthening at times is very limited. So they're difficult to reach populations. Very often we have discussed with Rinkuji and with others, there are districts and districts where more emphasis is needed as compared to the other districts. And those districts are the hard to reach districts, are the hard to reach populations to reach. So we need to concentrate that. The social determinants, we tend to forget them. We always need to be being health wallas. We always tend to be very health centric. But there are various factors which influence the uptake of contraception or uptake of services, issues like education, economic stability, gender-based violence, and various others. What gets monitored gets done. I think the program monitoring mechanism needs to be very, very critical in terms of the delivery, supplies, reach, uptake, upward data, age segregated, we'll come to that. The age segregated data, are we reaching 15 to 24? Is our data telling us, are we reaching them? Are we reaching before they are initiating their sexual activity, right? I think the challenge would be for us and the state would be, can we reach the populations before they initiate their sexual activity? That is just after marriage or in late adolescence activities. And we have a good platform now, that's the school health programs. And lastly, which will come much later also, is the intersectoral convergence. Next slide, please. The proposed strategies to reach for them, I think what I'm going to present is not what my work is. I think or the MAMTA's work is. I think what we are presenting is a kind of a consultative thought process that we have at times understood from the state health functionaries, from the district functionaries, from the development partners, from the academia, from the international speakers who have contributed at different times in different platforms, and also the young people in the end. So 3 objectives are basically coming out of some kind of wider consultative posture. And our special thanks, I think, to this process is of the TSU. And I think the TSU has really contributed in emerging these thoughts where we are talking today. The first one, achieve population stabilization. Again, going back, emphasizing on adolescent and newlyweds, the late adolescents and the newlyweds. Frontline workers being tailor-made or trained according to the messages for each subset of populations. Supplies and commodities, we have been talking for a long time. Sometimes we forget in family planning, abortion services make a very critical role in achieving contraceptive services. Second one, improve information services related to sexual reproductive health and nutrition for married adolescents. In global platforms, it's said that married adolescents are the invisible populations. They are usually not there in the services. So they are the ones I always say are the unreached population, which we need to, or hard to reach population where we need to reach more. State still has a data of around 10 to 12% for child marriages. So we need to look at that data carefully, and the concentrate child marriages are usually in hotspots in certain areas more as compared to the others. So we need to look at that. At the same time, strong linkages with existing RKSK and the school health programs as they exist today. I think those linkages are missing. I think those linkages between school health programs and the contraceptive services or the contraceptive knowledge and information needs to be reinforced and strengthened as we go further. I think this is something which has been spoken a lot, but needs to be done more and more by linking between the school health program, RKSK services, and our family planning program. Frontline workers to ensure that they understand the importance of imparting information on all the thematic domains that we are talking about. I think at times it's the training and the emphasis on certain components of the training enhances the message delivery component.
So it's important that we bring this up when we go into the training modules and training aspect. Monitoring mechanism is something which I emphasized earlier, continues to be an area which we need to focus on. The next objective being achieve gender, social equality, end child marriage, prevent violence against women, promote empowerment of girls and women. You know, I am part of one of the global group called the Gamma Group, where the experts meet. And that's about 8 to 10 of the global people meet very often. Now, over there, they have what they call as empowerment index. Wherever the empowerment index, which includes many of these variables, are high, family planning uptake and family planning use is always higher. So we need to look at those empowerment indices, which really affect or influence the contraceptive use and contraceptive uptake. Those indices have been developed now and they are available. It may be a great thought that if you put these indices at the district level and compare as a understanding in terms of how this is influencing our contraceptive use in different districts. Again, can generate desegregated data into detailed subcategories by age, sex, region, gender, and ethnicity. Focus on education and employment. I think we'll come into that in the second session. Role of ANMs in strengthening ANM and RCH portals, in line listing the eligible couples. Basically, whatever is this context setting is basically to say, how do we reach young people? Why do we reach young people? What do we do at the system scale level that can influence and strengthen our reach to that subset of population? Last slide, please. Steps for implementation. First, digital world, the National Digital Health Mission and the digital world in COVID times had really taught us a lot how to get digital, right? And digitalizing for the purpose of reaching the couples, tracking the contraceptive uptake, checking on the dropouts. You will have a presentation today by a renowned international speaker on how the dropouts from contraception or change of contraception can be worked together. I think the next slide is more for pharmacists and private sector. Engaging pharmacists and private sector in family planning program. I'm sure many of these areas are being addressed, are being looked at, but with focus on young low parity couple. While we were doing youth-friendly health clinics, it was always said that young people like to go to a pharmacist rather than going to an AFHC for contraceptive uptake. They usually go for eye pills or for condoms or for various other needs of contraception. Go to a pharmacist. Can we engage them more intensively for young low parity couples? Can young people be part of our design of the program implementation? That's the critical side. Globally, it's being seen. More young people get engaged into programming, more programming gets appropriate and suited to young people's need. Young people's engagement at the district level, at this block level, is critical to enhance the uptake of services and tailoring the services according to the needs of young low parity couples. Training modules need not say, I think we need to look at them, and I'm sure they are already there, but if we can reinforce and strengthen them for the training of our frontline functionaries in terms of youth friendliness. I think the term is, how do we tell our young people? You know, this concepts of adolescent friendly health clinic is getting outdated. Now people are talking about youth friendly health services. Services means when a frontline functionary interacts with young person, he or she needs to be youth friendly. It is possible that the person might come to normal routine services. It's highly possible because the timing may not suit, facility may be far. So it's important that services as such are made youth friendly and youth non-judgmental and all those criteria of youth friendliness. SPCC packages for the gender norms with the engagement of, I think we have been saying it, and I think the state has taken a lot of programs to engage the family members, that is husbands and mother-in-laws, and this is something which has been found to be very helpful, especially for young low parity couples.
Functioning of AFHCs and their link with youth-friendly services for the contraceptive update needs to be reviewed. Again, it boils down to how do we link RKSK, school health program, and family planning services for delivery of contraceptions. Lastly, private doctors, I think they play a very pivotal role in any services that is provided. Although we know family planning services by poor are more picked up from public than from private, but young couples, young people do access for the purpose of anonymity, for the purpose of confidentiality. They like to go to the private. So engaging private sector is critical for us to take it forward. Thank you very much for your listening. Thank you. Okay, with this we move to the next part of our session. I think there's a bit of, we would first have, can we have our youth representative come? I think after this, if young people can be there, that would be extremely helpful if they could be present in terms of, are they there, Kuslum? Right, just go ahead, right? Kuslum would coordinate that. It'll be nice to hear after me, what do young people say? Hi everyone, good morning. I hope everyone's having a great morning. मैं कुलसुम रिजवी हूँ and I will be moderating the session on voices from the young people, what they want and how to be involved. Because our session is it's futuristic in its design, एक अच्छे भविष्य की अपेक्षा करता है, which is why we thought that आज हम लोग आपके सामने इस मंच पर यूथ को लाएंगे ताकि उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स, उनके ओपिनियंस हम लोग जान सकें. एंड आई थिंक आफ्टर दिस सेशन विल बी बेटर प्लेस्ड कि हम समझें कि वेयर द यूथ इज कमिंग फ्रॉम टुडे. तो इसलिए मैं वेलकम करना चाहूंगी पवन को, पवन कुमार, स्निग्धा एंड रूपसी कुमारी को. प्लीज कम ऑन स्टेज एंड जॉइन अस. Instead of I introduce them, please आप लोग अपना introduction दे दें so that everyone knows where you're coming from. हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्निग्धा शर्मा है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं BSW बैचलर्स इन सोशल वर्क ऑनर्स कर रही हूँ और मैं आज यहाँ पे एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव आई हूँ आप सबके सामने अपने व्यूज शेयर करने एज अ यूथ कि हम क्या सोचते हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मैं रूपसी कुमारी, मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय में BA हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ. जो कि थोड़ा सा लगता है हिंदी ऑनर्स सर अभी कौन करता है, तो मैं हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ और मैं स्टेट वॉलीबॉल प्लेयर भी हूँ और मैं बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि पर और मैं अभी एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आई हूँ. दैट्स ऑल. थैंक यू. हाय एवरीवन, मेरा नाम पवन है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा भूल गया, मैं क्लीन एयर प्रोजेक्ट मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है और अभी मैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हूँ. रिसेंटली उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये चल रहा था जिसमें मैं उत्तर प्रदेश से था. थैंक यू. स्निग्धा, अगर मैं आपको पहले एड्रेस करूं
तो यूथ सेक्सुअल हेल्थ की अगर बात होगी एंड स्पेशली टीनेज हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशली, तो आपके कोई एक्सपीरियंसेस या एनी सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस टुडे? प्लीज गो अहेड। टीन एज सेक्सुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यूथ का जो अभी सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है वो है टीन एज प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी या फिर एडोलसेंट प्रेगनेंसी। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। फैमिली प्लानिंग पे बहुत जोर है रूरल और अर्बन एरियाज में, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत आजकल देखा गया है कि टीन एज जो लड़कियां हैं, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो एक तरीके से हेल्प लेने में कतराती हैं। कहीं ना कहीं इसका ये रीज़न है क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और उनका जो एक बिहेवियर होता है या जो उनका क्वेश्चनिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा सा सही नहीं है। जैसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आपका हस्बैंड कहाँ है, या फिर आपकी मैरिज हुई है या नहीं। तो उससे थोड़ा सा ऐसे फ्रेम ना करके उन्हें ये पूछना चाहिए कि आपका पार्टनर कहाँ है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। एमटीपी एक्ट को आए बहुत साल हो चुके हैं, पर फिर भी कई सारी लड़कियां हैं जो अभी भी घबराती हैं इस एक्ट का लाभ लेने में। और इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ा सा फैमिली को एजुकेशन, स्पेशली मदर्स को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गर्ल्स से ज़्यादा थोड़ी क्लोज होती हैं। और जो हम लोग सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं स्कूल में, मैंने जो अपना पर्सनल फील किया है, हम लोगों को एक सेपरेट जेंडर बेस्ड एजुकेशन दिया जाता था, जैसे गर्ल्स को अलग बिठा के, बॉयज़ को अलग बिठा के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक साथ दिया जाए ताकि बॉयज में भी वो सेंसिटाइजेशन क्रिएट हो, वो भी चीजों को समझे, और थोड़ा फैमिली में भी सेंसिटाइजेशन क्रिएट हो। Also, I know कि you are very passionate about issues like unemployment या नौकरी, बेरोजगारी, तो would you like to share with us, please? ऑफ कोर्स, बात करें यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की तो मेरे ख्याल से जो यूथ होता है वो सबसे ज़्यादा आजकल सफ़र कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से। ग्रेजुएशन के बाद सबसे ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के यूथ सफ़र करता है। अभी तक हमारे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वोकेशनल एजुकेशन में उन्होंने जो हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें उन्होंने जो वोकेशनल एजुकेशन ऐड करके, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है। इसको थोड़ा और इनकरेज करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में, ताकि जो हमारा यूथ है वो इसे सीख करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो थोड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि वो न्यूली ग्रेजुएट्स को अपने साथ काम करने का ऑफर दे, जिससे क्या होगा कि एक तो एक्सपीरियंस आएगा, और सेकेंड थिंग उन्हें आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट होती है, जिससे वो अपने न्यू आइडियाज़ और न्यू चीज़ें लेकर के आएंगी और अच्छे से काम कर सकेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दिस वाज स्निग्धा। अब हम रूपसी से सुनना चाहेंगे प्लीज ऑन अ फ्यू अदर इश्यूज। थैंक यू मैम। रूपसी, आपने नुक्कड़ नाटकों में काम किया है, Yes, ma'am. तो नुक्कड़ नाटक सा फेमस फॉर एड्रेसिंग वेरियस इश्यूज, तो व्हाट आर सम इश्यूज जो आप एड्रेस करते हैं अपने नुक्कड़ नाटकों में? अभी हाल में ही मैंने एक नुक्कड़ नाटक किया था एनएसएस के द्वारा, जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे था। उसमें मैंने जनसंख्या वृद्धि पे किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि जो लोग करते हैं, मतलब हम दो और आने दो, इससे थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम दो और हमारे दो पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली इतना ही हमने उस पर, ज़्यादा 11 मिनट मिलता है, इतना ही हमने प्रेजेंट किया था। और बाकी मैं
वुमेन और चाइल्ड पे बहुत सारा रिसर्च करती हूँ। थोड़ा मुझे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अलग अलग फील्ड में जाती हूँ, तो मैं उस पर बता सकती हूँ। चाइल्ड पे हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। जब चाइल्ड होने से पहले वुमेन को प्रेग्नेंट होती है जब, तो उन्हें फूड प्रोवाइड करती है, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक वो मदर फीडिंग करता है, लेकिन 1 से 4 ईयर मतलब 1 से 4 साल तक के बीच में बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। उस समय थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि अगर हम लोग उस समय इम्प्रूवमेंट करेंगे, जब वो यूथ बन जाएंगे तो उनके पास एक फिजिकली वो स्ट्रांग रहेंगे। अगर वो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो उनका वर्किंग आवर इंक्रीज होगा, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। अगर वो इफिशिएंटली काम करेंगे तो वर्किंग आवर इंक्रीज होगा, वर्किंग आवर इंक्रीज होने से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मैं स्टेट वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, तो अगर मैं फिजिकली फिट हूँ, अगर मैंने बचपन में 1 से 4 ईयर तक न्यूट्रिशन अच्छे से लिया है, तो मैं आगे चलकर जब फिजिकली फिट होंगी तो अपने यूथ को, मतलब जो हमारा यूथ है अभी, वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकेगा, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कुछ स्टेट्स होते हैं जो बहुत ही आगे हैं स्पोर्ट्स में, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भी पीछे हूँ, तो मैं आगे बढ़ सकूंगी अगर ऐसे ही बाकी गवर्नमेंट मुझे और हेल्प करने में। और मैं भी चाहती हूँ गवर्नमेंट के साथ हेल्प करूँ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 1 से 4 ईयर तक हैं, उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, ताकि हम आगे स्टेट को प्रेजेंट कर सकें एज ए स्पोर्ट्स फील्ड में। थैंक यू। थैंक यू रूपसी। पवन आप आइए, आपके भी थोड़े से हम लोग व्यूज जानना चाहेंगे। स्निग्धा ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, बेरोजगारी एंड जो यूथ इश्यूज फेस करता है, उसके अलावा बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड्स, कोई इश्यूज आपको ऐसे लगते हैं जो एड्रेस किए जा सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस? मेरा एक जो मैंने कोविड के टाइम मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, फेस भी की। कोविड के टाइम में घर चला गया था, मैं यहाँ पढ़ाई करता था और घर चला गया था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे जब जो हमारी गांव सेक्टर, जो ग्रामीण हमारा जो सेक्टर है, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जब वो प्रेगनेंसी का दौरान जो वो अपना जब उनका सफ़र चल रहा होता है, तो उसके दौरान उन्हें काफ़ी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और उनको ऐसी कोई नॉलेज देने के लिए जो कि सही हो, और उससे सुझाव देने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ उनका कोई सहयोग और साथ देने वाला आई थिंक नहीं है। आशा एनएम काम करती हैं वो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं आप सभी के थ्रू ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आशा एनएम को थोड़ा सा मेडिकल एजुकेशन दें, और इसके साथ साथ उन्हें कुछ ऐसी शिक्षाएं, मेडिकल संबंधी शिक्षाएं दें, कुछ जानकारियां दें, जिससे वो ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको समस्याएं होती हैं, उनका वो निदान कर सके। और सोशल सर्विसेज की या सोशल सेक्टर की अगर बात करें, तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी अगर एक फिक्स पेंशन हो तो इट हेल्प्स, अगर नहीं होती है तो? जी, इसमें मेरा एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने इस चीज़ फील भी की है। एक्चुअली एक मेरा दोस्त है, उसके जो पिताजी हैं काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, और उन्हें वृद्धा पेंशन योजना जो है उन्हें मिलती है, लेकिन उसका जो एक टाइम पीरियड है वो आई थिंक 3 महीने बाद मिलती है। और आज जब हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, और इस दौरान 1 महीने 500 रुपये मुझे लगता है कम है, तो अगर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी अगर हम लोग कर सकें, और या फिर उसे मंथली दे सकें, क्योंकि वो जब पढ़ रहा था तो उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी, कहीं ना कहीं उसे समस्याएं हो रही थी पढ़ाई संबंधित। तो ये चीज़ें इफेक्ट पड़ती हैं युवाओं को शिक्षा को लेके उनके, और कई सारे जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि वो कुछ करना चाहते हैं, फैमिली में पैसा नहीं आ रहा है, पेंशन पे निर्धारित है और पेंशन 3 महीने बाद आ रही है, तो फैमिली को चलाना, युवाओं को पढ़ाना, ये मेरे लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इस पे हमें सोचना चाहिए। और एक चीज़ ये भी थी कि आजकल का जो युवा है वो बहुत इंटरनेट फ्रेंडली है, उसे ज़्यादातर लोगों से बात करना, उससे पहले वो नेट पे सर्च करना चाहता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी मिले और मैं जाके उन लोगों से बात करूं पहले। तो हम चाहते हैं, हम लोगों का एज अ यूथ मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार की वेबसाइटें हैं, जो भारत सरकार की कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ही कम एक डेटा हमें मिलता है उस डिपार्टमेंट को लेके, उस
क्षेत्र को लेके तो हम लोग उस पर पूरा जो नॉलेज है वो गेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा बस एक ये भी सुझाव था कि अगर हम उस पर थोड़ा और डेटा ऐड कर सकें और इसके साथ साथ उसमें और कुछ चीज़ें अच्छे से ला सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो यही मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you so much. This brings to an end our session on youth representatives. These are our students from Lucknow University. They are from Balia, Lakhimpur Kheri and Lucknow itself. हम लोगों ने काफी सारे issues address किए and we hope that going forward government departments are able to work together. We are able to come together and address issues. And yeah, thank you so much for listening. Thank you, Krishna. Thank you very much for sharing. So let's move on to the next part of the meeting. And I think we heard these young voices. I think they are always very honest and frank, and they just say what they feel like. They always don't contextualize to what you think that it should be contextualized to. So it's great to keep on hearing these scattered views from young people and keep them in mind as you go further, as we move further into the planning processes and thinking ahead. May I just now I request Dr. Devendra Khandekar to say a few words of wisdom. His words are always so valuable. Thank you. Thank you, Dr. Mehra, for inviting me. I think it's an absolute pleasure to be here. Before I say anything, I just wanted to say that it has been an absolute pleasure to be among friends. Sitting with Dr. Renu Srivastava-Verma, Dr. Rinkuji, Dr. Prajapati, I'm seeing the representative from PRI department, Dr. Praveena, multiple colleagues from NHM, Directorate, multiple departments and multiple organizations. So I think I'm working in UP gives me, on behalf of Gates Foundation, nowadays I work for UP and Bihar, and working in UP gives a very special pleasure and special happiness because it gives you an opportunity to be the part of their progress journey. A state which is aspiring for 5 trillion economy, a state, you have recently seen the NFHS data, and I was talking with Rinkuji and I was saying what an impressive performance in family planning, what the impressive performance in family planning by the state. So all this can happen when there are so many things which are happening. We can always say that glass is half full or half empty. I think it is all up to us to say whether it is empty or full. I think given the complexities and diversities of the state, the way the state is moving in multiple areas, including family planning, is just commendable. And I can only say that it has been a proud privilege for Gates Foundation along with its grantee partner organization to work with the GOUP on this. Last year, there was a heavy discussion going on about the state population policy, and one of the very comprehensive policy which was developed through the multiple consultative processes. One of the good thing about in that policy, there are several good things, but one of the good thing what was struck was the focus on the adolescent. I think our challenge is we are looking at the new, and when I was listening to the young boys and girls from the Lucknow University and from different districts of Uttar Pradesh,
what was striking for me was, I think ये मान लेना चाहिए कभी कभी कि हम थोड़े से बूढ़े हैं. हम मानते ही नहीं है बहुत बार. हम ये मानते भी नहीं कि स्पीड ऑफ change in thought process is different. It's very fast. The way I was thinking and my mother was thinking and my parents were thinking and the way the children are thinking, there is a fundamental difference in that thinking. और and हमारी दिक्कत ये भी है कि जैसे जैसे हम उम्र में भी बड़े हो जाते हैं तो हमारा स्पाइन भी स्टिफ हो जाती है और मेंटल मॉडल भी स्टिफ हो जाता है. हम सुनना भी फिर हम उतना सुनते भी नहीं है. फिर our ability to listen to the youth is so limited. We think that our approach is right approach, and that's why then हम नए नए मॉडल्स बताते हैं जैसे adolescent clinics, as if कि adolescent और उस एज ग्रुप का बच्चा या बच्ची वो एक्सेप्ट भी करेगा मुझे हेल्थ सेंटर जाना है कुछ काउंसलिंग के लिए. हमें लगता है कि नहीं भाई हेल्थ सेंटर इज द राइट वे बिकॉज एडोल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एडोलसेंट बच्चा या उस एज ग्रुप का बच्चा वहां जाएगा. आई थिंक एक बच्ची ने बहुत अच्छी बात की और कि दे आर मोर फ्रेंडली विद द इंटरनेट. दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन. आर वी मैचिंग देयर एस्पिरेशन? Are we matching their approaches? बहुत बार इसमें ही सब गड़बड़ है और फिर चूक जाते हैं. So I think the only point and which probably I will say is whether it is a family planning or whether family planning is central in public health. Not because I am talking in the field, I am now in the family planning guys, but I fundamentally believe, and there is a Lancet survey and so many new publication which talks about the role of family planning with maternal anemia, which is a big problem, or role of family planning associated with the nutrition, etc. But at the heart of, and हम किस नजर से देखते हैं family planning? Our whole perspective matters. हमारा perspective है maternal mortality, infant mortality, MCPR. As if कि जो नया couple जिसकी अभी अभी शादी हुई है वो family planning method इसलिए यूज करता है कि उसको maternal mortality reduction करनी है या MCPR change करना है. That is your perspective, that is our perspective, that is not the perspective of the beneficiary. And I think any model works when the model is designed for the beneficiary and according to the aspirations of the beneficiary. Most of our models are designed by us, according to our thinking and according to our aspirations. That's why we come up with the adolescent clinic idea. That's why we think that adolescent will come to the clinics. That's why we always think about, whenever we in family planning, we will either talk about MCPR or related indicators or IMR, NMR, etc. If I am the youth of this nation, I am aspiring for better opportunities, better employment, better something to do in the life. And family planning is an enabler to do that. Right? Agar family planning, if it is an enabler, are we using family planning as an enabler? One issue is supply. So availability of right methods, etc. at different places. Right. ASHA, ANM, सब. But ये सोच लेना कि आशा और ANM पूरे काउंसलिंग का भार अपने कंधे पे ले लेंगी. So I think we are making huge leap of faith. I have told in the last one of the such assembly my personal story. 32 years back I had, more than that. Sorry, 95 I got married, so yeah, little more than that. 5 साल शादी के बाद और मैं बिल्कुल गांव का देहाती लड़का शहर के लड़की से प्यार हो गया और शादी हो गई और मैं अपनी नई नई वाइफ को गांव लेके जाता था. And she was also excited and I used to introduce her to the different households, different मतलब गांव में जब पहली बार किसी ने गांव नहीं देखा तो उसको बड़ा enthused लगता है. And I used to introduce her, I used to take her. This is around 32 years back. And she was very excited, my wife.
And after around 3, 4, 5 months, suddenly her enthusiasm got completely winged. And I used to wonder कि क्या हो गया भाई? Very excited. She was for all 5 years she was saying, वैसे प्यार में बहुत सारी बातें भी वैसे ही की जाती है, but फिर भी she was saying कि नहीं मुझे गांव में बड़ा प्यार है and I am very interested in all that stuff. Then I realized कि वो जिसके भी घर में जाती है, the only question she is facing is बच्चा कब होने वाला है? There is a pressure over the young married couple to prove her fertility. ये 30 साल पहले है. When I traveled to the UP and Bihar, or even in my village in Maharashtra, the situation has not much changed. Mindset has not much changed. हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे होंगे, इंटरनेट पे बड़ी सास बहू वाली सीरियल भी देखते होंगे, बहुत सारे नेटफ्लिक्स भी देखते होंगे, बट हमारा माइंड उस प्रोपोर्शन में थोड़ी चेंज हुआ है. There is still a pressure over the young married girl to prove the fertility. And what is the age of marriage in India? 19 years. NFHS सर्वे कहता है कि 18.8 years is the age of marriage in UP. So आपकी 19 साल की लड़की को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़े पूरे इकोसिस्टम को वो लड़े कि नहीं भाई नहीं, I am for family planning methods etc. वो fertility वगैरह वो आपके जमाने की. No यार. Even the educated, well-educated, empowered girl was finding it difficult. Imagine if somebody is from how it must be difficult for that girl. But बच्चे तो ये कर लेते, but लड़की को तो. So how do we create the enablers for this? How do we empower that couple and the girl so that she can resist such oppression? And that's why there is a role of Anganwadi, Asha, A&M, great. बट अगर हम ये कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग सिर्फ इनके भरोसे मतलब एक ग्रुप के भरोसे चलेगा तो देन वी आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक. कैन वी इन्वॉल्व द PRIs so that they can help in that because their voice matters? In SRLM there is self-help groups. How do we involve the self-help groups in a way that they play an enabler role for that couple? How do we educate in such a way that education department teachers have got a say in those settings? How do they play that role? So the whole issue of family planning, while it can be spearheaded by the health department and it should be spearheaded by the health department, but there is a large component of intersectoral coordination. The last point I just wanted to say is हमारी सभी फैमिली प्लानिंग की डिस्कशंस हम इतने टेक्निकल हो जाते हैं, हम as if there is a competition or there is a in any conferences there is a competition कि मैं लैंसेट वाला डेटा पब्लिश कर रहा हूं और सामने वाला और एक रिसर्च अपस्ट्रीम रिसर्च पब्लिश कर रहा है. I understand its value. I myself is an academician, so I understand its value. But are we communicating in a way which is understandable to the beneficiary? And are we designing the communication strategy in such a way that लोगों को समझे हमें क्या कहना? So my last point, and I want to conclude on this, is if you want to really see family planning as an enabler, why? Because अगर हमें 50% of हम कोई भी इकोनॉमी की बात करें और आपकी 50% of the population, if you are not making them powerful, how can you reach there? If you are not, then reach to them in a language which they understand. So that's why right communication strategies. Use all the resources at hand. Anganwadi worker, Asha, A&M, PRI, teachers, self-help groups. Develop the right strategy of communication campaigns. And most important, don't assume कि हम अपने तरीके से जो अपनी भाषा लिखते हैं वो लोग एक्सेस कर लेंगे. There are so many internet platforms which the boys and girls are using. Are we using those platforms for communicating the right messages? These are my very candid thoughts.
I hope I'm making a justice to the topic which is being said, but I thought in family planning, this is what is needed. And lastly, I just wanted to say, when everything is a priority, nothing is priority. There is more and more evidence which is coming. Once the method which is started by the young couple, that method generally continues. So that means, अगर किसी ने एक कोई भी मेथड ले ली, अंतरा ले लिया, कंडोम्स ले लिए, ओसीज ले लिए, कोई भी मेथड, their likelihood of continuing the same method is very high, unless there is a very big shift. So that means attract them young. आपको जो कोई मेथड लगती है राइट मेथड होनी है करके, so you give that knowledge early enough. And young की definition बदली है, हमें बदलनी चाहिए. Young to me, the maturity wise and all that, and there is more science to it. Up to 25 years, consider children, boys and girls as young. Don't define young adults means 18 saal, 19 saal. Thank you so much. There is no way I can summarize what he has said. He has said so many things, which I'm sure is a knowledge bank. We like to record his lecture and probably present it in one of the international forums on young and adults for them to understand how to appreciate adolescent and young adults. By the way, AYA is called these days. It's called adolescent and young adults, which means 15 to 24. That's being accepted more and more. And I think the government of India is also considering extending the adolescent RKSK program to unmarried up to 24. That discussion is going on right now. But important thing is what he, which I'll take just one line. Family planning is central to women's health and well-being. I think that's where the punchline is, that if family planning is introduced early in life, yes, they may not have a priority. They may have challenges to use it. They may have the pressure, which are social pressures. And that's why, as you rightly said, intersectoral response will facilitate the environment under which she can use. And acting on before marriage, late adolescent, empowering adolescents before they get married for contraception usually facilitates the early uptake of contraception. You touched upon an issue which is going to be the next talk, which is a recorded talk of a person from Washington, DC. The person is the director of the Population Reference Bureau and has done some excellent publication recently on policy brief on discontinuity, why young people discontinue contraception. And if not given choices, they tend to drop out from contraceptive use. Can we put the recorded talk, please? And just before we start, I had taken out a line from the internet. What sir was mentioning, that we are a bunch of 40-year-olds working for 60-year-olds, planning a world for 20-year-olds. So that's so true. Brilliantly said. Can you begin? Start, please. Hello, I am Catherine Stringel. PRB is a nonprofit organization headquartered in Washington, D.C. with regional hubs Sound nahi aa rahi, beta. in Southern Africa, as well as Central Africa. PRB harnesses the power of population data. Hello, I am Catherine Streifel, a program director with PRB. PRB is a nonprofit organization headquartered in Washington, D.C., with regional hubs in East and Southern Africa, as well as Francophone West and Central Africa. PRB harnesses the power of population data to inform and advance solutions to the most urgent challenges facing our world to improve the well-being of people globally. I would like to thank Dr. Sunil Mehra for giving me the opportunity
to share about practices for contraception. This presentation is based on a policy brief developed under the USAID-funded Policy Advocacy and Communication Enhanced for Population and Reproductive Health Project, PACE. The policy brief drew from a literature review, original analysis of service provision assessment data, and key informant interviews. Family planning programs are high-impact, cost-effective interventions that allow individuals to fulfill their reproductive intentions and improve maternal, neonatal, and child health outcomes. Family planning offers additional benefits to young women, including protecting access to education and employment, and reducing the health risks of early childbearing. I'm now going to highlight several ways that youth contraceptive practice differs from that of older women. In many countries, youth have higher rates of contraceptive discontinuation than older women, with unmarried adolescents exhibiting the highest levels of discontinuation. In India, the contraceptive discontinuation rate among family planning users aged 15 to 49 increased from 32.6% in 2015 to 49.6% in 2019. At 66%, Uttar Pradesh is the state with the highest contraceptive discontinuation rate. These figures are not broken down by age group. Youth are more likely than older women to become pregnant while using contraceptives. This may be because youth are particularly vulnerable to challenges in correct and consistent use of contraceptive methods. Youth are more likely to be offered and to use short-acting user-controlled methods, such as the pill, injectable, or condom. These methods are associated with higher discontinuation rates than the long-acting methods that require device removal by a healthcare professional, such as the IUD and implant. Youth are also more likely to source family planning from private and informal sources, such as pharmacies and drug shops, where infrastructure to support effective and sustained use, for example, through high-quality counseling, is limited. So, why do youth stop using contraceptives? There are three main reasons: changing reproductive needs, method-related reasons, and poor quality of care. Compared to older women, unmarried youth are more likely to discontinue due to irregular sexual activity. On the other hand, married youth may discontinue because they want to become pregnant immediately or early in their marriage, which may be related to societal pressure from their spouse or others. Method-related factors, which comprise side effects, for example, menstrual bleeding changes or weight gain, or health-related concerns, for example, fear of infertility or birth defects, are the main reason for lack of family planning uptake and discontinuation across age groups. Youth may be cognitively less prepared to deal with side effects and have a higher sensitivity to experiencing them than older women. For example, while many women fear that menstrual changes can lead to infertility, youth who have not yet started or completed childbearing may be more concerned about loss of future fertility than older women. Across age groups, poor quality of care contributes to high rates of discontinuation. Youth face significant barriers to accessing quality family planning services, which hinders their continuation of contraceptive use. Key barriers include stigmatization from facility staff,
concerns about confidentiality, and provider bias. Provider bias can lead to youth using a method that is not their preference or is inappropriate to their circumstances and needs, resulting in discontinuation. Challenges in the family planning healthcare system can contribute to discontinuation. To explore youth satisfaction with family planning services at public and private health facilities, we conducted an analysis of service provision assessment data from 7 countries. The countries were selected based on the availability of service provision assessment data since 2013. In 6 of the 7 countries, waiting time was the most common issue youth encountered. Other issues varied by country and geography, suggesting the importance of context-specific factors. We'll now consider 2 scenarios. A young woman arrives at a health facility to seek family planning services. She must wait a long time to see a provider. She is worried that friends, neighbors, or family members will see her in the waiting room. Her provider recommends the injectable because she is young and because other methods are out of stock. The provider does not inform her about side effects or dispel common myths associated with the injectable. After her appointment, the provider or facility do not contact her. She experiences bleeding changes and is concerned about the impact on her future fertility. She is not motivated to return to the health facility based on her experience and ends up discontinuing. In this second scenario, a young woman arrives at a pharmacy. With her limited resources, she purchases the pill. Because pharmacy and drugstore staff are not trained to provide counseling or information, she does not receive any. After taking the pill, she experiences side effects, including weight gain, which displeases her. Even though she does not wish to become pregnant, she discontinues the pill. The brief identified 3 best practices that are associated with higher rates of contraceptive continuation across age groups. High-quality counseling facilitates clients' choice of a method that meets their needs and preferences and their preparation to manage side effects. Counseling is particularly important for youth who have a lower tolerance for side effects. Active follow-up with clients who have begun using a method increases continuation and helps clients switch methods in the case of unacceptable side effects or other concerns. Access to the full range of contraceptive methods is important, given that women who are provided with greater method choice are more likely to continue their initial method, or if dissatisfied, switch to a different method. Based on these best practices, the brief made 7 policy recommendations for addressing obstacles to continuation among youth. To align with health sector and development goals, family planning programs are often structured in ways that intrinsically emphasize initiation of new users. Attention and resources to supporting existing family planning users should be elevated. According to an analysis of the policy environment in 22 countries conducted by PRB, only 4 have a policy that supports youth access to family planning services without consent from both parents and spouses, and only 10 have a policy that supports youth access to the full range of family planning methods. In India, no law or policy exists that addresses consent from a third party to access family planning services. Additionally, while a law or policy exists that supports youth access to a full range of family planning methods,
it does not define full range of methods to include long-acting reversible contraceptives, regardless of age, marital status, and/or parity. Policies that remove barriers, including requirements for third-party notification and consent, restrictions based on age, marital status, and parity, are necessary to promote contraceptive use and continuation among youth. Family planning programs must respond to the varying needs of different groups of youth and not consider them a homogeneous group. For example, the reproductive health needs and preferences of unmarried youth differ from those of married youth. While unmarried youth might be particularly concerned about how to prevent sexually transmitted infections, newly married youth might benefit from information on the health benefits of delaying the first pregnancy, and women in the postpartum period from information on the importance of spacing pregnancies. Similarly, the challenges youth encounter when accessing services vary by geographical context. For example, young women in rural areas who must travel long distances to health facilities might be particularly interested in learning about long-acting methods or self-care methods. Family planning policies should reflect greater customization in service delivery. Provider training should include values clarification and knowledge of youth cognitive development and needs. Contraceptive counseling for youth should incorporate a case history that includes prior contraceptive use and current contraceptive needs, advice on managing side effects, and easy to understand information that dispels myths and misconceptions about contraceptive methods. In Uttar Pradesh, 70% of current users report having been told about the side effects of their current method. Given that youth often obtain contraceptives from the private and informal sector, pharmacy and drug shop staff should receive training and support on the family planning methods they offer. To reduce the likelihood that youth who source contraceptives from the private sector discontinue due to cost, out-of-pocket costs for youth who have less purchasing power should be addressed through the provision of vouchers that youth can exchange for family planning services. Actively following up with women who are using a method increases continuation and facilitates switching in the case of unacceptable side effects. For example, a study conducted in rural Punjab found that high-quality counseling combined with active follow-up, either via phone or home-based visit, was more effective than counseling alone in encouraging the continued use of long-acting methods. Countries should implement a variety of follow-up mechanisms, including phone calls, SMS or automated text messages, home-based visits by a healthcare worker, and a hotline. Broadening the method mix available at service delivery points and through an effective referral mechanism ensures that youth can access their preferred method and switch to another method. Self-injection has been shown to promote continuation among young women and should be prioritized for this age group. This may be because it removes the time and cost associated with returning to the health facility for resupply visits and increases the potential for discrete use and user control. Additionally, advancing distribution of self-administered methods would grant women a supply of several months of their chosen method and reduce the likelihood that barriers to regular service access would result in continuation. This advanced supply is particularly important during, for example, the COVID-19 pandemic, when access to services may be disrupted
and clients may be reluctant to go to health facilities. Thank you very much for your attention. So, I think many of the issues raised is something which we did discuss in our earlier sessions. And I think it's just a reinforcement that there's enough evidence to say what we were talking about, especially when it comes to private sector, pharmacy, counseling, quality of counseling services, and reinforcement of messages at all levels to reach the young low parity couples, especially supporting them in changing the method from one to the other, depending on their reproductive needs, is something we all need to look at while we design our programming on young low parity couples family planning. Okay, moving to the next session, next part. I'm going to request our dear friend, Dr. Prajapati, to say a few words pertaining to medical education and family planning. It's something which we have not touched in the past. I think it will be the first time that we'll be asking the medical education to say a few words, how it can contribute to strengthen the state's effort in family planning. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir, and a very good morning to all of you. See, medical education produces doctors and who are supposed to carry on the activities regarding the health and other things. What I personally feel and what we have done is that we have used and trained our trainee doctors. That is right from the beginning, is when they enter. I was in Sevagram, Maharashtra, a place, if you have not visited, I would request that please do visit that place. Initially, I did not like that place, or whenever people used to come, including the governor and Manmohan Singh ji and all, they used to say, "Bhai, aap to swarg mein reh rahe hain," और मुझे इतना बुरा लगता था कि हम कहाँ गांव में आ गए हैं, हम उनसे कहते हैं आप भी आ जाइए, स्वर्गवासी बन जाइए. But over the time, the director of that place, late Dr. Sushila Nayyar, she had introduced a community system, and as soon as the students used to enter the medical MBBS course, they were allotted families in the village. And one medical student was given 4 or 5 families in a village. Anybody from those that family, if they had any problem, they used to come to them and then they used to license in the medical college. So the youth part, if we are using our youth to interact with the youth, definitely things will work out. All the discussions that we have had till now, we know these family planning methods, we know there is a need. We also know that we are not able to attain what we wish to attain. Then where is the fault? As far as family planning measures are concerned, it is all of us know it's a cafeteria choice. You cannot say that A, B, C, you take this, you take this, it's a cafeteria choice. Let a person use whatever he or she wants to use. And rightly said that Dr. Devendra said, he quoted his own example. There is a lot of pressure from the family members.
And even our youth team which were interacting, they also said that teenage pregnancy is a big problem. They also said that employment, jobs, all these things are there. So they should be cautious. Now for them, because it's a normal biological evolution, they have their sexual desire, they have everything. Today, it's good that at least we are able to talk of all these things. We are able to discuss. I still remember it was something around year 2000 when I went to a central school and I wanted to speak on this topic of adolescent. That time it was known as family life skills. The principal there said, "Sir, how will you talk on this?" I said, "Don't worry." I just gave a brief about this, and when we started with the discussion, I said, if anybody has problem, you give your queries, write down on a piece of paper. We will provide you the paper. We will provide you the pencils, so that, and you need not write down your name. And when that thing was circulated amongst the students of 9th, 10th, 11th, the type of questions which came, all the principals and the teacher, they said, "Sir, how will you answer?" But they were answered from the dice. And if it is a problem of A, it is also a problem of B, C, D, E. Only thing is that A had the courage to ask, rest was silent. But so, when you talk, when you discuss a problem, the solutions will definitely be there. Regarding the role that medical education can play in this is that we use our medical students to interact with the villages, like the Sevagara model we have, and even now the NMC has adopted that, and they are also planning the same thing. With that, they can talk, as we are seeing in the recorded this thing, that what are the barriers. Those barriers we will be able to break out. In our colleges, where we have trainee nurses, where we have trainee paramedical, where we have youth employees, their issues can be addressed. The family planning centers, everybody who wants to come, does not want to wait, does not want to talk in front of everybody. So that sort of privacy thing, that should also be. Now, how to go about it? We know that this should be done, this should be done, this should be done, but how it is to be implemented, these are the things in which we need to work. Dr. Amit said 40 से 60 साल और 20 के 40 साल, 20 साल, और फिर मैडम ने कहा 17 साल के लोगों को इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं. Definitely, it's our experience, we realize it, but now how it is to be done, this consultative workshop, we should come out 1, 2, 3, 4, and if we can say implement in some 2%, 4%, 5% in the beginning, that will be a big achievement. As a pediatrician, we know it, the Indian Academy of Pediatrics, our apex body which is there, the community health, they also know, the gynae, they also know, and our partners, Bill Gates and MAMTA, they are definitely after it. Authentic figures are there, and if we can do some sort of thing, it will be nice. Thank you very much, sir, giving me the opportunity. Thank you, sir. I'm looking for Dr. Rinku. Is she around? बेटे बाहर देखो कि Dr. Rinku, if she can join. I think she went for a phone call.
Sir, one thing which I thought medical education can consider very seriously is to make our medical graduates and postgraduate youth friendly. The basic component of youth friendliness will cut across not just family planning, various other service provisions. The fundamentals, it doesn't take a big chapter to include in that. There's a textbook of adolescent medicine, which very clearly states some of the fundamentals that can be brought in the principle, like we talk about respectful care in maternal health. I think when we are talking about AYA, adolescent and young adults, if there could be just a small section on youth friendliness, that probably will add immense value to providing services to young people, not just for family planning. It would be across the issues that young people are dealing. And I've been dreaming of it for last 25 years, that wish. And the madam from Dr. Sujata was here in the morning, who's running the adolescent friendly health clinic. We have tried to introduce in KGMU that kind of a thought process. Just for your one thing more, sir, I would like to mention is that, like when we talk of malnutrition, initially malnutrition was only concerned with the undernutrition, underweight, and now malnutrition also includes obesity and other things. Similarly, when we are talking of the family planning, in family planning, early pregnancy, now it is moving to infertility and delayed pregnancies. So when we are counseling the youth, when we are discussing with the people, let us also make them aware that this is the particular age when you should have an issue. What Dr. Devendra was saying was exactly the old people. They want that the delivery should be there, she should conceive and it should be done, but not at an early age. Now, because initially you are with your professional career, then you go for the job and it is delayed. Ultimately, you land up with delayed conception, and delayed conception followed by the complications. So that is other thing we should also address when we are talking of the family planning with the youth. Thank you, sir. Thank you very much. So let me take this opportunity to welcome Dr. Rinku Srivastava for her, probably the most knowledgeable person in this crowd on family planning. I was told that she's working with family planning for last, I don't know, 2 decades almost, right? Over to you, ma'am. Thank you. I can't say enough for her, I can tell you that. Thank you, Dr. Mehra. First of all, I say I'm not the most knowledgeable person, because this is the field like the science and the medicine and everything. We keep on learning. So with this, I just start like the presentations which were made today in the first half. They were quite eye-opener. We can't say because we are knowing most of the things, but yes, there is a need, especially when we are talking about the young adolescent and young group. So let me tell what government is doing to reach these adolescents and the young group. In fact, when Mission Parivar Vikas launched in 2016, there was one scheme especially targeting these couple, and even this group is the Nai Pehal Kit, which actually UP modified it as a Shagun Kit. And we have a support of our partners to rebranding it and making it more user-friendly. And we are actually reaching the newlywed. We are actually trying to reach newlywed at the time of marriage, but we all know the scenario in the UP it is quite difficult sometimes to for the Asha to reach them at the time of marriage, but actually they are still trying to reach within a month, and we are distributing the Shagun Kit, which has basically the purpose is to provide the family planning information and the commodity, but we are also giving some vanity things and also more in importance of the marriage registration and other things.
And as of now, we have like reached around more than 9 lakh newlywed. And there are schemes beside like Asha is going in the that what we call jo mass samuh vivah hote hain. And this actually Shagun kit made a very much difference. In particularly the UP scenario, most of the time there is a hitch speaking about the family planning, but our politicians and elective representative, they are also now giving the Shagun kit to the newlywed. So this change we have observed in the last 5 years. Second thing is it's not a one-time thing that Asha is reaching newlywed. We are also trying that the newlyweds should also come during the Khushal Parivar Divas, which is an event we organize on each 21st of the month. And in fact, that is this small event is a game changer for us. If we talk about the UP, when every services was hit during the COVID, but when we started the Khushal Parivar Divas, it has increased the acceptance for the family planning, and more and more people, because we targeted only 3 groups. First was the newlywed, second was the HRP delivered women, and third was the high parity women. So that program has given the momentum. Here also we are reaching the young adult. Third program, which we started, in fact, this World Population Day, we initiated the family planning counseling at all health and wellness center. In fact, it was inaugurated by our Honorable CM sir. And in the last 2 event of the Khushal Parivar Divas, we have started also the preconceptional counseling. Because we all know the adolescent, they have lots of nutritional deficiency. And when we talk about it, is particularly the anemia, which is like more than 50%. So we are also measuring the basic indicators like the BMI and the hemoglobin whenever the newlyweds they are coming, and also doing the pregnancy test kit also. So whoever is like found positive for the pregnancy, then the next step, whether they want for the abortion, that counseling is being given, or if they want to continue, then that is like registration done. Now, I agree fully with Dr. Devin Khandwaya that having calling the adolescent or the young adult to the health facility is not the solution. But that is one of the activity we are doing. But we are also, we have to promote the awareness and the access of the commodity. So we are placing the initially called as the condom boxes. Now we have changed it as a family planning box, which has the condom, EC pill, and the pregnancy test kit. And it will be available outside the wall of the health facilities initially, because this year we are planning it. And whoever wants, it's like a free commodity. In fact, I'm also working in SIPSA. So we have a project with NSS. So the youth which are here, I think some of you may be involved in that, the health program of the NSS. So even in the Lucknow University, the program is there. So we are doing the health awareness program, particularly focusing on the family planning and also the sexual violence. Now we are adding also the mental health component as well into that. And there also we are planning to have a family planning box for the easy access of these commodities, because we all know that we cannot start that oral contraceptive pills without the consultation, because some preliminary checkups are required. So that is what we are trying to do. And not to forget, whenever we are talking about FP, most of the time it is like a women-centric approach. No, it should not be. There is a need for the male participation, and that is the reason we like started for the last 2 years in the leadership of MD Ma'am and Health Department, the SAS Beta Bahu Sammelan. Here, when we are speaking about the beta, so beta is the husband of the woman. So to initiate the dialogue about the family planning, and they should also know their responsibility as a provider to access, to increase the support, and also as a beneficiary.
why the total load is on the woman, on the girl or the adolescent. So these are some of the things we are doing. But yes, I would say in the end, it's not the only role of the health department that everything related to family planning should be done by the health department. There is a need for the involvement of other departments, particularly education. So the proper information about the usage of the contraceptives is still missing in the youth and the adult. We always say that these people, they are very internet friendly. But when we also observe in our setting also, whenever we are Google, it's not necessary you get the right information. And so the educational department, they have to incorporate, I think that is a long pending thing, which we wanted, and it's not this time, I think a decade back also we wanted that the FLE program should be totally inculcated in their educational package, which involve all the health aspect, family planning, and other aspect. So there is a need that the teacher should also be sensitized because the first person the student can reach, maybe beside their parents, is to the teacher. So things are like state is doing, but there is a need that other departments should also be pitched into it. Thank you so much. Thank you, Rinku ji. Can I call you Rinku? Thank you, Rinku ji. It's always a pleasure to listen, and I think state is making tremendous strides. I think in the last 5-6 years, I've been working in the state for more than 22, 23 years. But in the last 5-6 years, what I've seen, ma'am, it's amazing to see the kind of programs that have been initiated and followed up. I think the important thing is followed up. And I think this followed up also means we need to emphasize on quality, right? Whatever we do, we need to have some quality standards and quality assurances, because young people, once they come into services, and if they go out of the services, very difficult to get them back into services. That's a well-known fact and well-evidenced fact. So young people, when they take into contraceptive services, to retain them in the contraceptive services is a big challenge. And for that, retaining them to quality services, tracking, follow-up, counseling, various other things matter. And I'm sure you know it all, right? It's just about taking it to the last mile. Thank you so much, ma'am. Let me now invite Dr. Renu Srivastava, Directorate of Health and Family Welfare, Director General Family Welfare. Ma'am, please, dais is yours. We look forward to your kind words. Dr. Khandet, Mr. Mehra, Dr. Mehra, Dr. Rinku and Dr. Prajapati, and out there, everybody. Hello, everyone. ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जिस पोस्ट पे मैं हूँ उसको कैरी आउट करने के लिए जो विजन चाहिए वो मुझे यहाँ आके कुछ बढ़ता दिखा। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जो यूथ मैंने अभी तक, सब यूथ ही वैसे, लेकिन जो 3 लोगों को खास सुना हमने, उनको कुछ कुछ जो परेशानियां हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा था टीनेज प्रेगनेंसी। मेरे ख्याल से उसको परेशानी ये थी कि हमसे उल्टे सीधे सवाल क्यों किए जाते हैं। तो डॉक्टर्स उल्टे सीधे सवाल नहीं करते। वही सवाल जब हम मैरिड कपल से या एक 30 इयर्स लेडी से करते हैं तो उसको ठीक लगते हैं, और वही जब हम एक टीन से करेंगे अगर कोई डॉक्टर, तो वो उसको ऑफेंडिंग लग सकता है।
तो हमें कहीं डॉक्टर्स को पब्लिक डीलिंग बेहतर बनाने की जरूरत है, या हम चाहें कि मेडिकल एजुकेशन एक पब्लिक डीलिंग का कोर्स भी उसमें ऐड करें, जो हम डॉक्टर्स बहुत लैक करते हैं। क्वेश्चंस, डॉक्टर्स के पास इतने काम होते हैं कि क्वेश्चंस तो वो नहीं चेंज कर पाते, क्योंकि उनको बहुत चीजें देखनी है, और वो जो हिस्ट्री टेकिंग होता है वो उन्हीं सेम क्वेश्चन से आता है। इतने जो तैयार किए जाते हैं, जो हम लोग को शुरू से सिखाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाते हैं सबकॉन्शियस में, तो हम वही पूछते हैं। वो ऑफेंडिंग लग सकते हैं, लेकिन नहीं लगने चाहिए। अब इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो पूछा जा रहा है वो बहुत, कोई आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं बैठा यहाँ। जो पूछा जा रहा है वो आपसे हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर ये इतना यूथ अगर हमारा इतना आगे आ रहा है, तो ये माइंडसेट भी बदलना चाहिए उसको। और ये कैसे होगा? ये एक जो नियो मॉडर्निज्म एकदम आया है, जो सर्ज आया है, जो इंटरनेट का हमारा इतना एक्सप्लोजन हुआ है, इतना एक्सपोजर हुआ है, वो सर्ज शायद कुछ टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। उसके बाद ये भी चीज आ जाएगी कि यूथ ऑफेंड होना बंद हो जाए। आजकल का आज मुझे जो ऐसा लगता है, हो सकता है हाँ ठीक है, एज वाइज भी लग सकता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जल्दी ऑफेंड हो जाता है। अब हम टारगेट कर रहे हैं अगर यूथ को, हमारा जो पॉपुलेशन है वो यूथ ओरिएंटेड हो गया है, हमको यूथ को टारगेट करना है। हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं, अब हमको उससे आगे बढ़ के अचीव करना है, तो नेचुरली हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं। तो हमें फोकस उस पर करना चाहिए कि जो चीजें वो डील कर रहे हैं, वो फेसबुक डील कर रहे हैं, वो ट्विटर डील कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, हमारे ऐड जैसे मिंत्रा के आते हैं, पेंटालून्स के आते हैं, हमारे फैमिली प्लानिंग के एड्स उस पर नहीं आते। तो हम एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं शायद उतना ज्यादा ना इसमें इन्वेस्ट कर पाऊँ, मैंने ये सोचा है कि मैं ट्राई करूंगी, लेकिन ममता है और बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, ये एड्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा उसमें प्लान कर सकते हैं कि हर जो 5 मिनट जो कोई भी ऐप अगर हमारे फ्री डाउनलोड होते हैं उनमें ऐड आते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के ऐड आए, डिफरेंट जो आपके बास्केट ऑफ चॉइस है उनके एड्स आए, उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एप्स ऐसे डेवलप किए जा सकते हैं जो फैमिली प्लानिंग ओरिएंटेड हों, जिनसे यूथ अपना आइडियाज ले सकते हैं, जो उसमें जिसमें उनको किसी एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजों से जो आजकल बच्चे एक्सपोज्ड हैं, जो नहीं होने चाहिए शायद। वैसे तो क्या आप कहा जाए कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जिन चीजों के लिए वो एक्सपोज हो रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि वो उन चीजों के लिए भी एक्सपोज हों जिनकी उनको जरूरत है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो उनको मिल रही हैं, जो अवेलेबल हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ सेंसरशिप, तो हर बाकी चीजें भी उनको मिले उसी तरह, जो उसी के साथ साथ उनके लिए फायदेमंद भी हों। तो हम अगर ये पॉलिसी अपनी थोड़ी सी हमको भी चेंज करने की जरूरत है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में टाइम लगता है। तब तक मुझे जो हमारी सपोर्टिंग संस्थाएं हैं उनसे मैं ये उम्मीद करूंगी कि वो इस तरफ कुछ अपना प्लानिंग उनका जल्दी हो जाएगा, उनका वो इस तरह सोच सकते हैं, मतलब अपना विजन इस तरह ओरिएंट कर सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है पार्ट वो उसका बढ़ाएं। हमें होर्डिंग्स नहीं दिखते कहीं इस तरह के कोई भी, ना हमको कभी कोई आता। जिंगल्स जो बनते हैं वो भी पहले बना करते थे, हम दो हमारे दो, अब तो ना ट्रायंगल कहीं बनता है ना कुछ, अब तो इतना ज्यादा परिवार नियोजन का नहीं है। हमने अचीव बहुत किया है, लेकिन हमने आशा और एएनएम्स के जरिए ज्यादा अचीव किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारे हैं डोर टू डोर, वो बहुत अच्छा हमारा आइडिया है, लेकिन यूथ उनसे जो हमारा बच्चे हैं वो उनसे बचते हैं। वो सोचते हैं कि महिलाएं, अभी तक कि हमारी जितना भी परिवार नियोजन हुआ वो सब वुमेन ओरिएंटेड हुआ है। जितना परिवार नियोजन लेके गई हैं महिलाएं ही आगे लेके गई हैं। तो अब जब यूथ आए तो लड़कों को भी, बॉयज को भी, मेल्स को उसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो अभी रिंकू ने भी बताया कि हम मिस्टर स्मार्ट शुरू करना है, जो मिस्टर स्मार्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम यूथ को हीरो बनाने की कोशिश की। वो अगर परिवार नियोजन करेगा तो वो हीरो बनेगा। तो अच्छी बातें हैं, हम लोग अगर इस तरह से उसको आगे लेके जाएं।
एक और उन्होंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कोविड में जाके जो वो बेटे ने बोला था कि वो कोविड में गांव में रहे, तो गांव में जाके उनको कोविड से में ये दिक्कत हुई कि उनको कुछ भी चीजें मिलती नहीं है, अवेलेबल सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, मतलब जैसे जो चीजें हम उनको अवेलेबल करा रहे हैं आज हैं कल खत्म हो गई, तो हमारी कंटिन्यूटी बीच में छूटती है, ये बात हमें समझ में आती है। थोड़ा सा एडवांस प्रिपरेशन की जरूरत भी होती है, जो अभी तक हमको हमारे जो हमारी संस्कृति चली आ रही है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करो, तो हम लोग कम चीजें आगे के फ्यूचर प्लान कम करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी भी जरूरत है कि आगे की आज जो आप तैयारी कर रहे हो उसके 2 महीने बाद की भी तैयारी आगे से आपकी पहले से होती रहे। क्या बच्चे हमको ये बताएंगे कि हम यूनिवर्सिटी में कंडोम काउंटर लगा सकते हैं बॉक्सेस? ऐसे हिलाया सर इन्होंने। क्या हमको स्कूल कॉलेजेस में ये चीजें सप्लाई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। So सभी टीचर्स ने ये कहा कि yes, we should place a family planning box. We are not going to name it as a condom box, but it has a condoms, it has a EC pill, it has a pregnancy test kit, so that कि आपके उसमें awareness बढ़े। तो ये चीजें we are trying, लेकिन ये है कि उसके लिए बेटर ये है कि आप एक बार प्रॉपर अपनी काउंसलिंग जरूर करा लें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, है ना? So thank you. Yes ma'am. Sorry. हाँ, ठीक है। तो अब मैंने अपना मैसेज कन्वे किया है, बाकी हम लोग बैठ के भी बातें कर सकते हैं जो अगर मैंने सोचा। बाकी मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस वर्कशॉप के लिए भी बहुत थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, आप लोग आगे जो भी करें। I can see there may be some thoughts from the audience. We can have few, if you permit, ma'am, right? Ma'am, can we permit? Yeah. Okay, so Dr. Dixit, I'm not surprised that he has a question. नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर दीक्षित, आजकल मैं प्रसाद मेडिकल कॉलेज में हूँ। पीएमएस में था पहले, तो करीब 40 साल की नौकरी मैंने की हुई है। और फैमिली प्लानिंग को जब मैं सुपरिटेंडेंट था सीएससी पर, ये सारे ट्रायल ऑलरेडी किए जा चुके हैं। हमने सीएससी पर और सब सेंटर पे बॉक्सेस तो रखे और रेगुलर सप्लाई भी थी, क्योंकि ऊपर से प्लानिंग आई कि भाई बॉक्स बनाए जाए। बट द रिजल्ट वाज मोस्ट ऑफ द बॉयज दे आर यूजिंग एज ए बैलून। मैं उस चीज पर ज्यादा नहीं जाना चाहता मैडम। सबसे अच्छी बात जो आज डिस्कस हुई है, वी हैव टू एजुकेट अवर यूथ, वी हैव टू एजुकेट। और कई चीजें भी ध्यान में रखनी भी है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या कहती है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनकी जो एडोलेसेंट एज में जो हार्मोनल एक्साइटमेंट होते हैं, उनकी भी नीड का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस चक्कर में हमने, आपको याद होगा मैडम, हर एक ब्लॉक पर हमने फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक खोली हुई है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने उस समय स्टडी किया था, व्हेन आई वाज अ जीएम आरकेएसके एंड आरबीएसके, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम वाज द टीनेज प्रेगनेंसी। बहुत कॉमन था उन लोगों को। तो वो समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मेरे को आज डिस्कशन में लगी कि उनके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में समाधान होना चाहिए। और जितने भी फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं, वो फ्रीली और कहना चाहिए अनइंटरप्टेड अवेलेबल होना चाहिए विद द आशा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारी आज के 30,000 पॉपुलेशन पर है, वहां होना चाहिए। अगर उसके बाद भी डिमांड ज्यादा है, देन वी कैन थिंक ऑफ इन कॉलेज एंड स्कूल।
बिकॉज स्कूल में एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, नॉट द मेथड्स। अदरवाइज उसका बहुत खासतौर से इस एज ग्रुप में, जहां पर आपने जैसे मेंशन किया मैडम कि वो इंटरनेट में बहुत कुछ एक्सप्लोजन मटेरियल अवेलेबल है, तो थोड़ा सा हमें उसका भी ध्यान रख करके प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Sir, can. हेलो, मैं डॉक्टर आर.के. चौधरी हूँ, एडिशनल सीमो लखनऊ, और डॉक्टर मेहरा के साथ हम यूथ हेल्थ फ्रेंडली सर्विसेज में गए थे स्वीडन, टर्की, डेनमार्क। उस समय आज से करीब 2011-12 की बात है, हम लोगों ने स्कूल में वहां पर जाकर स्कूल की विजिट की थी, और जो मैडम ने अभी बात कही वो चीज हमने वहां देखा। स्कूलों में, स्कूलों के टॉयलेट के बाहर बहुत अच्छा सा उन्होंने बना रखा था, उसमें किताबें थी और जो मैडम कह रही थी वो सब चीजें उपलब्ध थी। और आपको उस समय हमें सरप्राइज हुआ कि उनके टीचर ने हम लोगों को बच्चों के पास ले गए और खुद चले गए बाहर, और हम लोग ने जो क्वेश्चन पूछे या जो क्वेश्चन करें वो बहुत उन्होंने बेधक जवाब दिया। हर क्वेश्चन का जवाब था उनके पास और बेहिचक को कोई शर्मा नहीं रहे थे। तो ये चीज क्यों आ नहीं रही है हमारे इंडिया में, ये सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि आज की इस बरसात में अगर कुछ टीचर्स होते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि टीचर को भी इस चीज को अपने उनको दूर करना होगा कि जब एज है और डिमांड है, सब कुछ है, तो हम सही बात बताने के लिए हमको यही एज चाहिए, और इसी एज में सही बात बता सकते हैं। आज से 10-12 साल पहले कंट्रियों ने कर लिया है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल चला है। वहाँ यूथ हेल्थ फ्रेंड सर्विस जो क्लिनिक थी उसमें भी हम लोग गए, तो वहां पर बहुत अच्छा वेटिंग एरिया जो होता था उनका, इतना अच्छा वेटिंग एरिया था, टीवी लगे हैं उसमें, बहुत मतलब कि चल रही है एजुकेशन संबंधित बुक रखी है, पढ़ रहे बच्चे और अपने बारी का इंतजार करते थे। ये नहीं कि हमारी बारी जल्दी से आ जाए हम अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा इंडिया में, इस बात पर सोचने की जरूरत है। मेरे को इस ऑडियंस में 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ स्वीडन गए थे सन मैडम, उन 2008, 9, 10 की बातें हैं कि जब हम लोगों ने यूपी से 6 या 7 लोगों को, और पूरे देश से गए थे, यूपी से 7-8 लोग गए हुए हैं जिनको मैम के साथ जोड़ना है ताकि वो लोग कनेक्ट हो और वो उसकी सीख। वो स्वीडन इंडिया नहीं आ सकता, वो हमें मालूम है, पर क्या हम उसकी अच्छी बातें ले सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट चैलेंज मैम। इट्स नॉट अबाउट स्वीडन का, उनका कल्चर, जैसे डॉक्टर हरिओम दीक्षित ने कहा, कल्चर एंड वैल्यूज वो अलग है, हमारे कल्चर वैल्यूज अलग है, हमारा सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस बहुत अलग है। मैं इसलिए मेडिकल एजुकेशन में बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं पे द मेडिकल फ्रेटर्निटी ओवर देयर इज प्रिपेयर्ड टू रिस्पेक्ट अ यंग पर्सन। That respectfulness for young person is fundamental to providing youth. मैं धीरे से टच कर रहा था उस बात पे कि that respectful for youth is fundamental to providing any services to youth. Anyway, I won't go more into it. Anybody else? Yeah. There is a lady at the behind. आज assembly में women's का session चल रहा है. So let's have your women talking more, right? Somebody is talking from behind, beta. I'll come back to you. Thank you. सभी को नमस्ते, मेरा नाम अर्चना सिंह है, मैं वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज हूँ। और जहाँ तक कि अभी मैं सुन रही थी सभी को, हम लोग सभ्यता और संस्कार की बात कर रहे हैं, और पुरानी सदी में जो चीजें थी, अभी भी हम लोग स्कूलों में वर्कशॉप करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स का यही कहना होता है, मैम लड़कियों का अलग सेशन लीजिए और लड़कों का अलग लीजिए। तो ये सभ्यता और संस्कृति, जब हम लड़कियां और लड़के बराबरी में, अभी जैसे जेंडर की बात हो रही थी, बराबरी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सभ्यता और संस्कृति को लेके तो चलते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां महिलाओं को या बच्चियों को दबाने की, जैसे चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज अभी भी लखनऊ में आपका इस साल का डाटा है जिसमें 55 चाइल्ड मैरिज हुई है। तो मुझे लगता है जो 55 चाइल्ड मैरिज हुई है उसमें
वो बच्चियां कहीं ना कहीं 1 साल या 2 साल के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ले रही हैं, क्योंकि उस एज में बहुत जल्दी हो जाता है और उनका पहला बच्चा होता है, उसके बाद ना जाने कितने अबॉर्शन होते हैं। तो जो हमारे ऐसे सेंटर्स बने हैं, आशा और एनएम जो गांव में जा रही हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, जितना मैंने देखा है कि उनका काम है उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाना, हॉस्पिटल तक ले जाना, और उनसे वो आशा और एनम भी खुल के बातें नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो संकोच है कि हम कैसे इनसे बात करेंगे कि आप कॉन्डोम यूज करिए, ये प्रिकॉशन लीजिए। तो हम सभ्यता और संस्कृति को कहीं ना कहीं किसी लड़की का बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो वो कुर्बानी देने से अच्छा है कि हम खुल के बातें करें। हमारा ये समय हट गया है कि नहीं भाई हम ये कैसे बात, जब हम उसको समाज में एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, जैसे कि अभी इस बच्ची ने कहा कि और हॉस्पिटल में ऐसा मैम है, लोग बोलते हैं डॉक्टर्स का जो क्वेश्चनेयर है वो नॉर्मल नहीं होता है बात करने का। जब एक शादीशुदा महिला जाती है तो उससे बहुत प्यार से पूछा जाता है आपके हस्बैंड कौन है, कहाँ हैं, कैसे। जब एक लड़की जाती है टीनेजर एज की, अरे तुम आई हो, ये सब काम करने की जरूरत क्या है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एक दिमाग पे बहुत बड़ा असर डालता है। तो जो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, मुझे लगता है अगर वहां पे एक काउंसलर बैठे और वो काफी जेंडर की समझ रखती हो, खुल के बातें कर सकती हो, तो ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। Thank you. Very well said. Thank you. I think this all brings down to understanding the young people's need and sensitive to their thinking. Yeah, you had. Hello, Dr. Jyoti Gamble, UCSC अलीगंज सुप्रिटेंडेंट। सर मैं जितना सुनी हूँ फैमिली प्लानिंग जो भी प्रोग्राम्स है वो हमारे जो हेल्थ सेक्टर है सर वहाँ से तो मतलब अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट जिस जगह पे जरूरत है सर, जैसे कि बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, जिस यंगस्टर ग्रुप में इन चीजों की जरूरत है वहां पर जैसे कि एडमिशन होता है उसी समय फैमिली प्लानिंग मेथड्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाए तो उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स उन्हें मिलेंगे, तो आई थिंक वो जो मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसमें वो नहीं होंगी। Education related question next session में रखेंगे हम, Thank you, क्योंकि sir. next session is inter-sectoral and I think these are very relevant questions. उस session के लिए what can education do for young people on contraception? Yeah, ma'am, please. We need to hear your views, ma'am. It will be so wonderful. जितना सेशन मैंने अभी सुना और जैसा कि मैम ने कहा, मैं दोनों चीजों से एग्री करती हूँ कि डेफिनेटली कॉन्डोम बॉक्सेस या फैमिली प्लानिंग बॉक्स वो डेफिनेटली कॉलेजेस में और स्कूल्स में होना चाहिए, इसलिए कि व्हेन वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, इलीगल अबॉर्शंस जो हमारे प्रेवलेंट है अभी भी, तो जब प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमें ही देना होगा। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब हम स्मोकिंग के लिए कॉर्नर्स बनवाते हैं, एयरपोर्ट पे भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा, तो एक ऐसा बिहेवियर विच इज नॉट गुड फॉर द यूजर ईदर इन पब्लिक और इन प्राइवेट, उसको अगर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं तो वो बिहेवियर जो पोटेंशियली बेनिफिशियल है उस ग्रुप के लिए जो वल्नरेबल है उसके लिए डेफिनेटली हम लोग को इसके लिए कॉन्डोम बॉक्सेस या फैमिली प्लानिंग बॉक्सेस जैसा आपने कहा जिसमें कि प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट भी होगा, वो बहुत यूजफुल होगा। दैट इज माय सजेशन। Wonderful. Thank you. Thank you, ma'am. We do not even know how much eye pills are sold in this country. We have no idea on the volume of eye pill that's sold, which really, if you go by companies' data, that the number of pills that eye pill are being sold, we know sexual activity is happening, right? But we are keeping our eyes shut to the fact that the eye pill data is something which we need to capture and understand how eye pill is being used as post sexual activity use, right? University के around जो pharmacy एक study में देखा गया था, there is a very high level of uptake of eye pills in these shops, right? So that's is a reflection of what you're saying, ma'am, that if we were to take it to university, take it to students, I think it's a great idea, great thought. I think there will not be any problem in doing that, because like Dr. Rinku, she said, the teachers accept it.
Another thing is that it is available next door. आप बाहर निकलिए, आपको मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है. तो जब already it is available to them, what there is absolutely no hitch in providing it. Only thing is that it is to be with consent of the school authorities, and they will agree if it is properly addressed. One thing which Madam was saying that when we organize such talks and all, they want that separate for females and separate for males. We have been doing this adolescent activities at several places. Initially, to break that hitch, the parents and the teachers, they have some issues कि आप पता नहीं कैसे एड्रेस करेंगे, आप क्या बताएंगे. पर जब आप बताना शुरू करते हैं तो बताने में आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो कि कहीं भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है. आप उस इश्यूज को एड्रेस करते हैं इन ए बड़े सोफिस्टिकेटेड वे, और उसी तरह से वी टेल द टीचर्स दैट हाउ यू शुड एड्रेस, वी टेल द पेरेंट्स हाउ यू शुड एड्रेस. और जब ये बैरियर ब्रेक हो जाता है तो जितनी भी गलतफहमी है वो गलतफहमियां दूर हो जाती हैं. दे स्टॉप गोइंग टू द क्वैक्स, दे स्टॉप अप्रोचिंग द फार्मासिस्ट फॉर गेटिंग द ट्रीटमेंट, एंड दे एक्सेप्ट व्हाटएवर इज राइट. सो व्हाट वी डू इज दैट वी फर्स्ट आस्क देम, मेल फीमेल आप एक साथ या अलग. अगर उन्होंने कहा अलग, वी लीव इट टू देम. अलग अलग, नो प्रॉब्लम. Address here, address here. Can we have a combined because you're having the same discussion there? Okay, okay, no problem. Then it comes from them. This is how we should do it. Very well said. It's very well known as an evidence. To do this, you need a good trainer, a good teacher who can make both the sexes comfortable in the discussion section, and nobody becomes, if you're talking about menstrual hygiene, you're talking about menstrual periods, presence of boys is fundamental because they have to handle them at their home when they have a small one-room apartment where there is brother, there is father, so managing menstrual. I'm just giving that for an example. This is fundamental, that it's the teacher who needs to be trained well to transact comfort level of sexuality, which is comfort level for both boys and girls. And there's good evidence to say that. We have good science and good evidence for that. Let's get to the audience. Mr. I think this girl, and she has not spoken yet. She has been raising her hand for some time. Hello, sir. Good afternoon, sir and ma'am. So adding to the ma'am's point, I am Dr. Shobha. I am working with the UPTSU. So listening to this conversation and adding to the ma'am's point, when I heard that we are talking about gender and respectful care. So my question is that when are we going to talk about the trans people in family planning? When are going to include that population in family planning? Because when we talk about bias and gender discrimination, then I think that they are at the most receiving end of this discrimination and bias. So when we are talking about families and youth and menstruation and everything, so we know that girls are facing discrimination, but most of the population is yet to know that trans men also bleed and they also need these counseling and sanitary products. So my question might be an outlier for this discussion, but I just wanted to know that when we are going to add this population in the discussion of family planning or family planning programs. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you very much. I think Dr. Manoj Shukla wanted to. Myself, Dr. Manoj Shukla, GM routine immunization right now from an HM side. As a father of a teenage girl, and also after working in last few years for adolescent, the gap between the teens and the parents of teens and grandparents will always remain. Even if we place certain counselors as suggested as they will also grow, the gap again will increase. We need to focus keep each and every person in the community, each and every service provider, हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा कि टीनेज की जो अपनी नीड है उसको किस तरह से हम फुलफिल करें. सभी को उनकी सभी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो डॉक्टर्स हो. मे बी वी लर्न अलॉट कि हम कैसे सवाल पूछते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, और हम सबसे एक से पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे एक से पूछने से काम चलने वाला नहीं है.
मैं अपनी बेटी को भी जब बात करना चाहता हूं और मैं उसके भले के लिए बात कर रहा होता हूं तो भी उसको लगता है कि शायद मैं उसके भले की बात नहीं कर रहा हूं। द सेम थिंग गोज विद एनी टीनेज गर्ल और बॉय। तो हमें सिस्टम में कुछ इस तरह का, चाहे वो ट्रेनिंग पार्ट में चीजें शामिल की जाएं या कैपेसिटी बिल्डिंग पार्ट में शामिल की जाए, हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा ताकि हम उनके ज्यादा करीब हों या वो हमें अपने ज्यादा करीब पाएं। केवल ये कर देने से कि हमने सब चीजें अरेंज कर दी, काउंसलिंग के हमने बहुत सारे काउंटर्स खोले, लेकिन वो काउंसलर्स जब हमने उनको रिक्रूट किया था दे वर क्वाइट यंग, उनकी 24 साल 22 साल की एज थी, बट नाउ दे आर 35 36। अब वो डिस्टेंसेस फिर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी भी रिजिडनेस आ रही है। तो एवरी काउंसलर नीड टू बी अगेन वेरी अटेंटिव टू द एज ऑफ टीन्स। अगर उनके करीब नहीं जाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। Thank you very much. I think these young people wanted to say something. Let me ask these young people, if you don't mind. Hanji beta, yeah, you wanted to say something. थैंक यू। मेरा नाम पवन है और मुझे ये बात करनी थी कि जैसे कि हम लोग जब घर पे होते हैं, गांव में होते हैं, तो ये जो कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हम अगर बात करें तो स्कूल्स में जब इन सब चीज़ों को आई थिंक सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कि इंटर कॉलेज हाई स्कूल जो उसमें कुछ जो टॉपिक्स होते हैं सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड वो स्किप करा दिए जाते हैं। आज भी वो चीज़ें स्किप हो रही हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पे एक स्कूल है CMS, वहाँ के स्टूडेंट है और उसने भी मेरे से इसने बात कही कि उसके कॉलेजेस में भी ये जो टॉपिक्स हैं उन्हें स्किप करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यूथ को ये जो जानकारी है, जो नॉलेज है हेल्थ से और इन सब सारी चीज़ों को लेके लाइक सेक्स एजुकेशन, तो ये काफ़ी लेट में मिलती है, जो कि उन्हें एक एज जो होता है हमारा, और उसके बाद आई थिंक अगर हम बात करें कि हमें ये जानकारी अगर 20 में मिल गई होती तो हमारी फैमिली प्लानिंग और कई सारी चीज़ों में हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। और वही जब नॉलेज हमें वही 35 से 30 के बीच में मिलती है तो वो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे ये लगता है, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इससे शुरुआत करने से पहले मुझे जो घर की माएँ हैं, मम्मी लोग हैं, आंटियाँ हैं, पड़ोसी हैं, उनसे जो विमेन है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है लाइक पीरियड्स उनके खुल के बात करें। फैमिली फ्रेंडली होना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि बहुत से लोग के अंदर ये हिचकिच है, कई सारे लोग बात नहीं करते हैं। और ये जो समस्या है ये मुझे लगता है सबसे, जब तक ये निकल के नहीं आएगी तब तक हम लोग सेक्स एजुकेशन से संबंधित किसी भी चीज़ों पे अच्छे से ना तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ना तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जो माएँ हैं उनको ध्यान देना होगा कि वो अपने बेटी को, अगर वो 14 साल की है तो उसे बताएं कि ये चीज़ें आप में हो सकती हैं, ये कोई नई नहीं है, ये सबके साथ होता है। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेहतर है अगर हम अपने घर में जो मेरी बेटी है, बहन है, उनको हम ये शिक्षा दे पाएँ तो ये आगे और बेहतर होगा, उसको उसके फिजिकल सारी चीज़ों को लेकर। और सो थैंक यू। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जैसा कि मैम ने कहा था कि जो यूथ है या जो टीनेजर है वो ऐसी चीज़ों में मतलब इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा भी देख ले रहा है। तो मुझे ये चीज़ ऐड करनी है कि वो अर्ज आती कहाँ से है। अगर वो चीज़ें, वो टीचिंग्स हमें बचपन से दी जाए, हमें बता दिया जाए, जैसे कि भैया ने ऐड किया कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर क्लास 8 में होता है, स्किप करा दिया जाता है। 10th में होता है उसका, क्योंकि वो बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले होते हैं, उससे आपके नंबर बढ़ने वाले होते हैं, तो सिर्फ लिमिटेड पढ़ाया जाता है जितना उससे आपको नंबर आ जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और 12th में मैं बायो से थी, तो 12th में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ाया जाता है। होता क्या है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो लोगों के अंदर वो उत्सुकता जागती है कि हम जाने, और वो जानने के पीछे हम कुछ और बहुत कुछ ऐसा डिस्कवर कर जाते हैं जो कि हमारे लिए उस समय इतना जरूरी नहीं होता है। तो कहीं इस चीज में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। Very well said, and I must
clap for you. You know, एक बात मैं आप एक लोगों को एक बताऊं बात बेटा, मैं भी कहना चाहती हूँ। मैं कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो देख लेते हो वो गलत है, वो कुछ नहीं, मतलब ये कोई बात नहीं है। जो एक्सपोजर है वो सबके लिए बराबर है, तो इसमें कोई अर्ज आती भी है तो वो गलत नहीं है। सब कुछ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल है और हमें इसको नॉर्मल लेते हुए ही आगे चलना है। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं, अगर कुछ कोई ऑफेंड हुआ है तो आई एम सॉरी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा कि जो नहीं ओके ओके नहीं मैम, नो प्रॉब्लम। मैं एक बात बताऊं आप बच्चों लोगों को, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तो जो होती है होनी चाहिए ना, तो तभी तो नॉर्मल है हम लोग। हाँ। वो नहीं होंगी तो फिर तब तो ठीक नहीं है ना। फिर जब वार्तालाप होता है तो ऐसा ही होता है बेटा, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ी बात आपको जानूं मैं बताऊं कि ये सेक्सुअलिटी एजुकेशन का मुद्दा इस देश में 20 साल पुराना है बेटा। जो बातें तुम बोल रहे हो ना, ये सारी बातें युवाओं बोलते हैं। दो चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड, कि पॉलिटिशियंस एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स need to be sensitized on needs. So we need to have a special session where you people can talk in front of them and explain them your needs. क्योंकि ये जरूरत तो साइंटिफिकली एविडेंस्ड भी है। ये भी बताया गया है कि कौन से क्लास से शुरू होनी चाहिए, किस तरह से टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से उनके प्री ट्रेनिंग करिकुलम में, उनके प्री एजुकेशन करिकुलम में कैसे इंक्लूड होना चाहिए, सब कुछ हमारे पास है। माता पिता 1988 में बनारस में हमने पहला कार्यक्रम शुरू किया था सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे, 1998 सॉरी। वहां पे सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम निकल गया, बच्चे सब जानना चाहते थे, माता पिता नहीं चाहते थे कि ये बातचीत हो। साल बाद माता पिता चाहते थे कि इसके बारे में मेरे बच्चों से बातचीत हो, और माता पिता भी कहते थे हम नहीं करेंगे पर आप कर लीजिए मेरे बच्चों से बातें, राइट। सो ये एवोल्यूशन प्रोसेस है। आई थिंक एक हद तक हम पहुंचे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो रियलाइजिंग इट मोर एंड मोर। आई मस्ट से दैट जो हमारे 20 साल पहले बैरियर्स थे वो कम हो गए हैं, पर अभी भी हमको काम करना पड़ेगा टू मेक आवर पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड नीड ऑफ इट, राइट। कि बच्चे मांग रहे हैं, ये युवा इन सुविधाओं की उपलब्धि मांग रहे हैं। मेरे को याद है earlier health minister Mr. JP Singh in his meeting was talking very openly about sexuality and sexual education. So I think it's not that people are not asking about it, people are knowing about it. I think आप लोगों को अपनी आवाज उठाते रहना है, अपने कॉलेज के लेवल पे भी, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे मिले, रेज दिस इशू। और ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, इसको जारी रखेंगे and we shall continue to have talk and discussion on these issues. Thank you very much. सर एक मिनट और, क्या प्यार करना गलत है? नहीं ना। प्यार होता था, प्यार हो रहा है, प्यार होता रहेगा। लैला मजनू का नाम सुना है? हीर रांझा का नाम सुना है? तब तो न तो डिजिटल था, न इंटरनेट था, और कहां से कहां क्या लिंक मिल जाता था। कभी मौका मिला तो मैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में डेटिंग एंड रिलेशनशिप पर एक लेक्चर देना चाहूंगा। ठीक, दिस ऑल दीज टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग एट द नेशनल लेवल एंड देयर इज, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। गलत अगर है तो सिर्फ हमारी सोच है। एज राइटली सेड दैट यू शुड बी अवेयर, इज राइट। मैडम ने कहा डिजिटल में आपको ग्रास्प करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और कहां तक आपकी लिमिट तक आपको उसको एक्सेप्ट करना है, कहां के आपको एक लाइन खींचनी है, उसके आगे आपको वो रियलिस्टिक नहीं है, वो अनरियलिस्टिक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एंड दिस इज द थिंग, द बेसिक concept that we should take after today's meeting, that we have to train our youth for the family planning in the right method. Thank you. Thank you, sir. That would be probably the last question. Yeah, please. I'm Dr. Ahmed Abbas Aga from UNDP. I'd been part of consultative workshops for जो आपकी
फैमिली प्लानिंग के साथ साथ जो है वो पूरी एक पॉपुलेशन पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश बना रहा है। एक्चुअली इट हैज touched on such topic also, but it's a wonderful that आपने मेडिकल एजुकेशन को भी इन्वॉल्व किया। आई फील दैट जो अभी बातचीत हो रही थी, that we have to make certain redesign the communication strategy। और एक हम जब भी बात करते थे फैमिली प्लानिंग पे तो कई बार ये बात होती थी, सब आइडिया देते थे कि कॉन्डोम जो है वो एक वेंडिंग मशीन में रख दिया जाए ताकि वो उनको किसी आदमी से बात करने की जरूरत ना हो। इफ दे वांट टू परचेज इट दे कैन गो पुट द मनी देयर एंड। लेकिन अभी तक ये किसी ने किया नहीं है, एक्सेप्ट आई सॉ इट इन 1 or 2 hotels where they are doing it in 5-star hotels। बट इन टर्म्स ऑफ जैसी यूनिवर्सिटी में अगर ये कोई ऐसा कियोस्क लगा दें जहाँ पे एक बॉक्स है फिर भी उसको किसी रूम में घुसना है, लेकिन अगर कोई वेंडिंग मशीन है जहाँ पे 2-3 चीजें कमर्शियल भी मिल रही हैं, चिप्स है और ये साथ में एक ये है कि उन्होंने 10 रुपए डाला तो उनको गवर्नमेंट का जो है वो कॉन्डोम जो गवर्नमेंट सप्लाई वाला है वो मिल जाए, एटलीस्ट वी कैन ट्राई वन समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज के लिए सेपरेटली अगर वी कैन हैव अ सेशन एंड वी कैन हेल्प रीडिजाइन इट और उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें। दूसरी मैं जो कहने जा रहा था डॉक्टर प्रजापति ने ऑलरेडी उसको उन्होंने कह दिया। I wanted to say that many times I had been talking to teachers regarding family planning and especially sexual education for the youth. But what happened is that I found that many teachers were not hesitating actually on it, and they themselves needing some sort of formal kind of a training or support system that they would come forward to। तो अगर इस तरह के लोग जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, फैमिली प्लानिंग और मेडिकल वो जाके यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लें, उनके साथ वहीं पे उनको सपोर्ट करें वहां पे बैठ के कि वो टीचर्स भी लेक्चर लें, तो उसके बाद वो कहें कि अगर कुछ होगा तो मैं सप्लीमेंट कर दूंगा। तो जब एक वो हेजिटेशन खत्म होता है, क्योंकि हम बात सिर्फ टॉप नॉच स्कूल्स की नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हर उस स्कूल की बात कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, irrespective of whether it's a private or it's a government। So we can have something like that, और वो एक कैंपेन की तरह अगर हम चला सकते हैं, we can do it। तो in coming 3 to 4 years we can see the change among the teachers themselves, the staff also, and we can address the first of all the staff and the teachers and the academic people rather than straight away going for the children। Definitely we have to go, but separately we have to actually sensitize them and help them actually go beyond their inhibitions। So that was my point that I wanted to make. Thank you। Thank you। So last question, Ranjan ji, you wanted to ask something or rather share something? शेयर ही करना चाह रही थी। एक्चुअल में बातें हो चुकी है। जब मैं यंग थी, लगभग 17 साल की थी, तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी इस तरह की एक वर्कशॉप में, हमारे स्कूल कॉलेज ने मिलके किया था। और हम लोग, मैं कोएड में पढ़ती थी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों थे उस सेशन में। और जब सेशन स्टार्ट हुआ तो क्योंकि थिएटर था तो लाइट्स ऑफ थी सारी, उसके बावजूद जब शुरुआत हुई सबकी नजरें अपने आप झुक गई, कुछ इस तरह के सीन्स आए हमें, मतलब शायद उसमें भी क्योंकि हम लोग एक्सपोज नहीं थे उस चीज के। और बट एक अच्छी चीज थी कि जो मैम ने बोला, एक अच्छे से भाषा ऐसे इस्तेमाल करी गई थी, इतने सरल तरीके से सब कुछ समझाया गया कि जब हम बाहर निकले तो हम में से किसी को भी, अंदर जब थे तो थोड़ी सी शुरुआत में गिल्टी फील हुई, बट बाहर निकले तो हम लोग सब नॉर्मल थे। और वो एक हमारे लिए एक नया वो था कि हाँ, ये सब भी एकदम नॉर्मल चीज है, लाइफ का एक पार्ट है जिसमें हमें जाना है और अच्छे से जाना है। और उसने मेरे को बहुत सहयोग किया है, मैंने मतलब मेरे बच्चे के एज में, उनके बीच के डिफरेंसेस में, और शायद मैं भी उतने अच्छे से उनको वो दे पा रही हूँ। आज वो 16 और 17 साल के हैं, लेकिन अच्छे से मैं उनको उनके साथ वैसे ही बात करती हूँ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसे हुई थी। तो ये फर्क पड़ता है, अगर सही समय पे सही चीज सही तरीके से बता दी जाए तो जरूर होना चाहिए जो मैम ने बोला। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Can we just take it to the next session with due apologies? I think otherwise, but I have two ladies. आज assembly में women's के session चल रहा है, so I can't stop ladies. Please go ahead.
Hello everyone, I'm Diksha and I work with CSBC Ashoka University and currently helping the government, Ms. Rinku ma'am, with the communication side of family planning communication. And right now I'll be representing the youth. As we are saying, I think we are 4 or 5 people who are below 25, and I would just want to raise 2 things. I think youth is very curious, and we need to understand that we need more correct information about things. So when we were discussing about placing boxes, I think the discussion should be more about what condom does, right? Or what pills actually do to your body. I want to understand, if I take a pill, what happens to me. So correct information is something that we should focus on. And as you were saying, the next session would be on information and how we can develop that. So we'll leave that. I think we'll leave that question to that. The second thing was, if I have a question, I Google. That is what youth does. We Google and we try to find answers on Google if we don't find it in a more trusted environment. So the communication, of course, should focus on how internet is also giving right information or not. And the third thing is taboo. Pregnancy, sex education, everything is still considered a lot of taboo, even in our head. By the time we reach teenage, there are certain things and taboos that we also create in our head, that we cannot go and talk about this particular thing to people. So when we end up in a hospital and a doctor asks some questions that might make us uncomfortable, then we would just retreat into a space of internet where no one is asking us questions that can make us uncomfortable. But it is a taboo subject, and our planning and strategy should also acknowledge that taboo. Good. Thank you. Thank you. So I just want to add on things. When I was mentioning about that family planning boxes, and particularly जब मैंने कहा degree colleges में we are like going to place that. So it is not only the boxes. Actually degree colleges में क्या है? Presently हम लोग 35 जो degree colleges है, including Lucknow University, वहाँ पे हमारा जो NSS volunteers के साथ project है, तो उसमें हम लोगों ने एक क्लब, एक रूम भी एक सेग्रीगेटेड है, जहाँ पे सारी आपकी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. आई थिंक यू मस्ट आल्सो, कभी आप लोगों ने भी देखा हो, और वहाँ पे हमारे सेशंस चलते रहते हैं. और उसी के एड ऑन में, जिसमें कि हम सारे मेथड्स के बारे में भी बताते हैं, सारे उसका डिटेल भी है. और हमें ये चीज अभी जब व्हेन वी वर वर्किंग ऑन मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन, तो आई विल से कि हम समझते हैं कि आप अभी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं. हम लोगों ने जब डिस्ट्रिक्ट में कई डिस्ट्रिक्ट से लोगों को बुलाया, एंड वो लोग काफी लोग हेल्थ में ही थे. इवन अ स्मॉल कॉन्डोम की ही बात कर लीजिए, उनको सारे स्टेप्स नहीं पता थे. तो ये एक चैलेंज है, वी एक्नॉलेज दैट. तो वो चीज हम लोग अब सम्मेलनों में वो एक्सरसाइज करा रहे हैं. द सेम थिंग वी आर वेरी सून एडिंग इन एट योर लेवल. बट ये देखना पड़ेगा कि टीचर कितने कंफर्टेबल है, आप कितने कंफर्टेबल है. बट यस, स्टेप वाइज वो चीजें इंफॉर्मेशन हम लोग और ऐड करेंगे, बिकॉज रखने से कमोडिटी कोई फायदा नहीं होता जब तक हम उसके डिटेल नहीं बताएंगे. दैट इज वन ऑफ द थिंग. नेक्स्ट थिंग इज कि काउंसलर्स का विजिट होता है, बट एज मैडम से कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी रिसोर्स क्रंच है, हम अपनी फैसिलिटीज को ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. बट स्टिल वी आर टेकिंग काउंसलर आउट फ्रॉम इधर द AFHS या RMNCH जाते हैं. बट अभी भी हम सिर्फ 35 पे काम कर रहे हैं. तो इसीलिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको आपके अपने कॉलेजेस के ही लोगों को एज ए काउंसलर हम ट्रेन कर सकें कि इनिशियल आपको ही आंसर उनसे ही मिल सके. थैंक यू. Thank you very much. Okay, so we are coming to an end of this session. I recollect when HIV was blooming and there was epidemic, all universities were supposed to have condom machines. And I know Delhi University started way back, I'm talking of 2000 now. Youth-friendly clinics or services were to be established at the university level, along with which every university would have a youth-friendly health services along with the condom provisions and other family planning. So that concept was there way back in 2000, 2002, but some or other we could not take it to scale, which I think everybody is saying we should have within the university, those kinds of services and contraception availability. Thank you very much for this session, and let me
just take one more session before we break, if we have the permission. So, because I think if we take that one session, we have, then we can move straight away for 10 minutes break and then come to the intersectoral session, if it's okay with you all, ma'am. Just one more session. Can I request Dr. Rajiv from the Population Council to give his presentation at this stage? Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Mehra. Thank you, ma'am, everybody on the dais. What I'm going to speak today, some data. I think we have seen some data so far, and sorry. I'm going to speak about only young people and see what are the opportunities for intersectoral convergence or intersectoral collaboration, I would say, is existing. My name is Rajiv Acharya. I work for Population Council. I'm making this presentation on behalf of a consortium called FPMLE Consortium. FPMLE Consortium has an objective to generate information, in-depth information on barriers, facilitators, or opportunities, and suggest kind of areas of programming, areas of focus for programming on the use of contraceptive methods for young people as well as for low parity couples. There are 5 partners in this. Population Council is leading this. Along with us are 2 TSUs from UP and Bihar, and then there is ICRW, International Center for Research on Women, and then Center on GEH, Gender Equity and Health. This is University of California, San Diego. So we come together and complement each other to talk about many things. For example, social norms and gender, how that influence family planning and what we should do about it. What are the influencers of behavior of couples, men and women? Who are the influencers in their family planning journey? And then, of course, data for the monitoring and other aspects that are being collected by the TSUs and the population councils throughout the journey. So today I will use some data sets. Some you already know, NFHS 4 and 5, everybody is aware of that. And then I'll also use the IFPS Integrated Family Planning Survey that was done by UPTSU IHAT in 2020-21. And there is a small study of couples that we did in 2 districts of Uttar Pradesh. And we'll take that data also into account. So let's talk about the situation first, and then we'll talk about the opportunities for intervention. So this is, sorry, very confusing. This is the reproductive journey of an average woman, age 20-24, and their husband. Okay. So what is important here? Very interestingly, maybe some people already noticed from NFHS data, we talk about legal age marriage and how many women are marrying before that age is of concern to us. In UP, more men than women actually marry before legal age marriage. So before 21, 23% men marry, and 16% girls marry before age 18. On average, young women have their marriage at about 19 years, 18.8, 18.9, about 19 years. Within a year, they have their first child,
And the first time they use contraception at age 22. So there is a large gap to 3 years between marriage and their first contraceptive use. In fact, less than 20%, 17% in this graph, they are actually, these are those who first use contraception before the first child. And 55%, more than half, actually use first time any contraception after 2 children. These are some of the statistics we should keep in mind when we talk about young people and their journey, reproductive journey. Go to the, so I'm talking to people who are going to take action, I hope, monitor the program, not directly to the young people. So I'll use some of the statistics that are not exactly relevant to them. For example, MCPR and other things. So current use of contraceptive and unmet need we are talking about. UP has actually made good progress over last 5-10 years. If you look at use of any modern method or use of any reversible modern method, they are actually doubled from 2015-16 to 2019-21. And unmet need has come down from a quarter, 24.5% to now 19%. But even 19% unmet need among young women is actually very high. We always target demand satisfied to be at least 75% of the total demand. For young women, for young people, it is only 46%, even after increase from in the last 5 years. So you can see that we have a long way to go. One good thing about UP is the method mix. As we see for the adults, even in case of young people, that method mix is very interesting. And this is very good method mix in a sense. There is a lot of spacing method, reversible method use, and modern reversible method use has actually increased over the last 5 years. While the traditional method, which is on rise in many states, also in UP, actually for young women, it is going down from 41% to 33%, which is a good thing according to us. We go to the next slide. This is the, where do they get these methods from? This slide gives that public-private breakup. And if you see in NFHS 4, 2015-16, only 19% of these methods were being sourced from public sources. 81% were coming from 81% were coming from private sources, shops and many other private facilities, shops. And in UP, as you see, that there's a lot of condom use and they're being sourced from the private sector mostly. However, because of the government focus on young people in the last few years, you can see the definite change in that method sourcing in UP among young people. It is now 36 versus 64, where sourcing from public sector has actually increased about, it's actually about doubled, where that relative proportion who are getting it from private sector has gone down. So how is the program doing with the young people? We have seen, we have discussed a lot, what should be done, what should not be done. But what is actually the situation? You know, again, there is an impressive improvement in the frontline health worker talking about family planning with the young woman. However, the levels are still very low. You can see in last 3 months, if they talk about family planning, is only 16% women were being talked about family planning with the health and family, frontline workers. However, there is a little bit better situation in terms of advice during pregnancy. In the third trimester, during third trimester, they're supposed to talk to women about family planning, right? And that is 56% increase 3 times from 2015-16. However, we don't have data from NFHS 4, but NFHS 5 data shows that post-delivery discussion about family planning
is still very low in the states. It's only 17%. What about postpartum family planning? Postpartum family planning has also, as you see, there's an increase in the institutional delivery. There has to be increase in the postpartum family planning, modern methods adoption. And here that shows that even in NFHS 4, it was 15%, and in NFHS 5, it is 33%. But if you see the other way, where there's an increase, it is still very low. 33% means we are actually missing 67% of these women during the postpartum period. We could catch them and then they could use contraceptive, modern contraceptive. Health worker outreach. So we talked about health worker outreach. Why it is important? Because of this reason. That their interaction with FLWs has a significant effect on the current use of modern method. And if you see, or the intention of using my method, if you see, is 16% if they have never had a discussion versus 23% if they had a discussion. If they had a discussion, there was 29% had no intention to use the next 12 months, whether it is 39% were. So there is a effect of family planning workers or field level workers talking to young women on their actual use. So there are opportunities to use FLWs to improve contraceptive use among the young couples. Now, quickly, let's go into few of the family planning opportunities that we have, and the intersectoral opportunities that we have. So we all know that one good time to catch women for family planning is antenatal and postnatal, during antenatal and postnatal. And this slide shows if they had an ANC services, the availed ANC services, particularly 4+ ANC services, there is a higher likelihood of their using family planning after that. For those who receive family planning advice during the postpartum period, postnatal period, the first one is about family planning, receive family planning advice during the 3rd trimester. It is not being shown here because of some issue with the computer. 3rd trimester is 36% versus 29%. If they have been given advice, they are more likely to use method later on. If they have received family planning advice after the delivery, post-delivery, there's a high chance that they will use contraception. We did a little different analysis on this slide, where we took the 75 district data at the macro level on the maternal and child health, as well as for the family planning outcomes. And if you see, so what we have done, we have created an index of MCH program intensity and looked at that, how that intensity changed or improved between NFHS 4 and NFHS 5 versus how family planning outcomes have changed. And if you see on the right hand side, you will see that higher. So we had 3 categories: that low change in the intensity, medium change in the intensity, and high change in the MCH program intensity, which shows that if there's a high change in the program intensity, you have better MCPR. The change in MCPR is much higher, the green dots. Reversible modern methods, very high. The coverage indicators, FLW outreach or care indicator, quality of care indicator, like inform about side effects, is much better here for those districts where the change in the MCH is actually much higher. Similarly, unmet need is lower in those districts. So there is opportunities again here for on collaboration between MCH department, MCH program, and the family planning program. Yes, 2 minutes. SHG program and FP among young women.
you know about SHG, only 5% of young women are actually member of SHGs. However, even if there is a simple membership of SHG, you will see that being a member of SHG actually works for family planning, because there are higher likelihood of using family planning currently or in the next 12 months. We all talk about women's autonomy and how that affects family planning. We just quickly show here that women's autonomy has a big effect on family planning. Higher autonomy among women leads to higher contraceptive use, and that is clear from our slide. Women who are allowed to move out alone, or and have higher self-efficacy are more likely to have intention to use or use currently. This is an interesting slide. I don't have much time, so I'm not going to go in detail. We had 2 scales in our couples survey where we talked about men's gender attitudes and their masculinity thing, and masculinity conformity to masculinity norms, and then categorize them into 3 different type of men. One is equitable men, who are equitable in this sense, ambivalent, who are neither here nor there, and rigid men, who are very rigid in terms of their masculinity norms and this. And these are the percentages that in our sample. An important thing to know is that equitable men are more likely to use contraceptive, have favorable attitude towards family planning, has higher chance of discussing with their wives about family planning, and use modern methods. Equitable and ambivalent men are more amenable for a change. So the program should use that kind of infrastructure, the kind of framework to implement for men engagement in family planning. My last data slide is on migration and family planning, and it is to show that migrant should be especially looked after, because migrant women who have a migrant husband have very high unmet need, and they are very low use of contraceptive. It's not only that, if you look at the divisions of UP where the high migration versus low migration, in the high migration area, this difference is even higher than this. So at the end, there is good news about UP. UP is really good in doing good in terms of going towards a stabilization. The fertility has declined quite fast, from 3.8 to 2.4 now. Consistent improvement in both FP outcomes and their program indicators, and also relatively better method mix. But there are challenges that we have talked about. For example, contraceptive demand is significant among young women. That needs to be addressed. Very low levels of FLW, field level workers outreach with the young women, that needs to improve. We'll have a greater impact on MCPR. 17% have received, only 17% have received family planning advice in the postpartum. That certainly could go higher and can make some impact. So there are opportunities of several other departments, like we'll talk about education, knowledge generation, and those. There is opportunity for rural development department to talk about family planning, or at least have more and more young women in the SHG group to have an impact, and the Department of MCH can also make an impact. So thank you, ma'am, and others in the National Health Mission Uttar Pradesh, who have helped us do these studies, and also BMGF for the funding. Thank you. Thank you, Rajiv. So with this, we are coming to the end of the session. But before I end, let me start with welcoming Shri Alok Kumar ji, IAS Secretary, Planning and Nodal Officer for 1 trillion economy. And I must tell you, he is one of the biggest motivator for at least us, right? It's always we, and I think Amit cannot say no to this, right?
at least I can say, and Amit and all our team can say that he has always been there for us to advise us in way to go forward. कहीं challenge होता है तो हम आलोक जी से पूछ लेते हैं सर इसको कैसे करें आगे. And I must tell you, he is a wonderful human being. One knows him as a mission director way back, and he has been continuing to have interest in health sector. Thank you very much for being here, sir. And I hope you are able to make UP into 1 trillion economy very soon, right? And the women's health is centered to that. The women workforce is 50%, right, sir? So we are talking on an issue which is for women's health and well-being, and he has very, very gracefully agreed to be with us. May I request everyone to kindly share the mementos with our honorable guests on the dais, please. Can we start with Alok Kumar ji, please? May I request for the memento to be given to Dr. Renu Srivastava, please. Amit, aapka. Shall be passed. Can we have the memento for Dr. Rinku Srivastava, please? No, it's always. Can we have it for Dr. Prajapati, our beloved Dr. Prajapati, please? Amit? And now, one and only one, Dr. Devendra Kandat, please. Thank you. So with this, we'll just break for 10 minutes maximum. I humbly request you to come back within 10 minutes, please, to start the next session so that we can finish it within an hour or so. Sir's time is extremely precious, right? So
just a bit of change. Since sir has to go, may I humbly request you people to be seated. And then after he has shared his views and thoughts and given the blessings, we'll go for the intersectoral. Sir, please. Thank you, Dr. Sunil. Thank you, Dr. Devendra. Dr. Prajapati is there, DG Family Welfare, Dr. Rinku, यहाँ पे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से, मेडिकल हेल्थ से, आई गेस मेडिकल एजुकेशन से, कई लोग चेहरे NHM के हमें दिख रहे हैं, सब हमारे पुराने साथी, पुराने कलीग्स, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी, आई होप कि डिफरेंट जो अलग डिपार्टमेंट से, पंचायती राज या बाकी से भी आ गए हैं क्या? सही, यू आर देयर। आप लोग सब, आप कहाँ से हैं? UPSRL से। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ा सा टाइम का ये चीज था जो आपके स्लॉट के हिसाब से, तो इसलिए, एंड यू वर सेइंग 11:50 से कि सर आ जाए, तो आई केम। मैं यही चीज कहना चाहूंगा, एक हमेशा ममता की तरफ से ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है फैमिली प्लानिंग में, लास्ट ईयर भी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, आई आल्सो पार्टिसिपेटेड। लास्ट या 2 साल हो गए, लास्ट टू लास्ट, हाँ 2-3 साल हो गए। तो ये चीजें, दिस गिव्स अस अपॉर्चुनिटी कि किस तरीके से हम लोग मिल करके सोचे। डॉक्टर साहब बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं तो किस तरह से हम लोग मिल करके सोचें फैमिली प्लानिंग को, और इस तरह की चीजों को, फैमिली वेलफेयर को हमें आगे ले जाना है। मैंने जिस चीज के ऊपर आज, मैं जब डॉक्टर अमित ने बुलाया था कि बोला क्या चीजें, व्हाट शुड आई टॉक, मतलब क्या क्या मैं बात करूं फैमिली वेलफेयर, और उस चीज से अब हेल्थ से मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि रिप्लेसमेंट लेवल के हम लोग काफी नजदीक हैं। कितना है? 2.1 पे, हम 2.35 पर NFHS सर्वे, हाँ, तो वी आर वेरी नियर टू रिप्लेसमेंट लेवल। लेकिन अगर हमने 2.1 या 2.0 भी अचीव कर लिया, सो शैल वी स्टॉप एट दैट? क्या हम ये चीज सोचें कि हाँ, जो हम लोग को फैमिली वेलफेयर के बारे में जो ये चीजें करना था, क्या हम वहां पे रुक जाए? नहीं। तो मैं समझता हूं कि वो उससे आगे जो हम लोग को जरूर अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली वेलफेयर, देन वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स कि हम क्या चीजें, क्या उसे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स या उसे हम चॉइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उन चीजों से हमें आगे बढ़कर सोचना होगा। और वहीं पर आता है इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात। मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत जरूरी है कि हम वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो उसे देते हैं या नहीं देते हैं, हम उसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमें फैमिली वेलफेयर या उसमें भी यही चीजें करना है, इफ यू लुक एट अदर स्टेट्स जिन्होंने कि बहुत अच्छा किया है, या जो लोग किया अच्छा, तो आगे हमें कहीं ना कहीं पर उसको हमें इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा वुमेन को। आज हम लोग कुछ फिगर्स की बात करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि आई वाज लुकिंग आफ्टर टेक्निकल, जब मैंने हेल्थ उसमें टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में देखता था, तो मैंने उसी का फिगर उठाया। यू नो कि हमारे यूपी स्टेट में जो पॉलिटेक्निक्स और ITIs में है, उसमें एनरोलमेंट परसेंटेज क्या होता है वुमेन का? एनी गेसेज? कितना परसेंटेज होता होगा? आउट ऑफ 100 कितने परसेंटेज वुमेन होते होंगे? कोई आदमी गेस? हाँ, 5%, तो खैर बहुत लोग हैं, लेकिन दो इट इज स्टिल 15%। मगर 15%, 100, अगर 100 स्टूडेंट्स में से who enroll for ITI और पॉलिटेक्निक कोर्सेज, 14% and 15% इस तरह से ITI और इसमें, व्हाट मतलब दिस स्पीक्स ऑफ कि हम कहां पर हैं। और अगर हमें फैमिली वेलफेयर के बारे में सोचना है, या अगर उसको ये चीजें करना है कि फॉर इयर्स टू कम, फिर हमें ये चीज नहीं सोचना पड़े, आपको जा करके नहीं बोलना पड़े कि यार ये ले लो, दिस इज द मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आप इसको ये चीजें करना है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दोस थिंग्स आल्सो। और इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, मैं डॉक्टर सुनील को भी ये कहूंगा, और लाइक मतलब हम लोगों को नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट लेवल। व्हाट आफ्टर अचीविंग 2.1, व्हाट इज टू बी देयर? सो वो हमें ये चीज जरूर, अगर ऑलरेडी मेरा डिपार्टमेंट और हम लोग सभी के साथ मिल करके इंटरसेक्टोरल हम लोग बात करते हैं, हम लुकिंग आफ्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम लोग, तो सबका हमारा रोल है, ठीक है ना? बीट UPSRLM, बीट पंचायती राज, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अभी कुछ चीजें स्टार्ट की गई थी जो अभी यूपी स्टेट में स्टार्ट किया गया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट BC सखी। इज अ वेरी वेरी नोबल इनिशिएटिव। व्हाट इज BC सखी? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पहले से भी होते थे, ठीक है, मगर उस चीज को चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमारे APC साहब ने उसको एक अलग लेवल पर ले गए हैं। ऑल 58,000 विलेजेस शुड हैव ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या है भाई, अगर वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगी,
या इस तरह की चीजों में एक्टिविटीज में इंडल्ज करेगी, तो क्या आपको लगता है कि आपको जाकर के उसके फैमिली में सास बहू सम्मेलन कराने या बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी? नहीं होगी। हम उसको किस तरीके से, एंड देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज। हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट, अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब का मिशन है दैट वी हैव टू मेक आवर स्टेट ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस जो हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन और एनरोलमेंट ये चीज परसेंटेज होगा। आई विल टॉक अबाउट अगेन, एक इसी के साथ की फिगर होती है, एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है दैट गिव्स यू द इंडिकेशन की वर्कर्स में हमारा टोटल फीमेल पार्टिसिपेशन क्या है। अगेन आपने तो 5% गेस किया है, लेकिन दैट इज अगेन वेरी लो, 11%, जस्ट 11%। जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं ऑफ कोर्स वो हमसे ज्यादा है, केरला इज अराउंड 28%, ठीक है। बाकी और स्टेट्स उसमें भी ईस्टर्न वेस्टर्न, तो अगर हम लोग इन चीजों पे बात करना स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलरली इंटरसेक्टोरल जब हम लोग बात करते हैं, तो हमें फोकस उस पर करना चाहिए। वी नीड नॉट कि हाँ ठीक है हमेशा हमें जाकर के ये बात नहीं करनी है कि फैमिली वेलफेयर या ये चीजें ये करो, हमें उसके कैसे हम उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए, कैसे हम उसको वर्क फोर्स में लेकर के आए, और वो चीजें होंगी तो जरूर मुझे लगता है कि हम लोग ये अचीव कर पाएंगे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बीसी सखी का जो एक्सरसाइज किया गया, या उसके अलावा एक और ये चीजें किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को फर्स्ट टाइम जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम, उसमें भी उसको एज ए कोटेदार इंगेज किया गया। तो इस तरह की कई एक्सरसाइजेज की गई हैं, ठीक है, मगर उनको हमें और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जब हम लोग फिगर देखते हैं, फिगर्स विच आई जस्ट किसको, हाँ विद्युत सखी को, और उसमें भी ये चीजें किया जा रहा है, उसमें भी कोटेदार वो वाले इस चीज में भी है। तो ये तो केवल कुछ चीजें हैं, मतलब मगर 1-2% हम लोगों को 11% से एटलीस्ट आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी कि वी टेक इट टू 25%, एट इज 25% तो वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन आवर वर्क फोर्स। और अगर हम लोग यूपी स्टेट की बात करें तो, और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो, दिस होल जो अपॉर्चुनिटी है दिस विल बी लॉस्ट अगर हम लोगों ने उनको इसमें नहीं जोड़ा। एंड देन दिस थिंग इज कि अगर उस और फोकस हम करते हैं, क्योंकि जो कि करना भी चाहिए, और उधर हम फोकस करेंगे तो दिस आवर होल जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस फैमिली वेलफेयर एक्सरसाइज। अगर हम एनीमिया की बात करते हैं, बाकी एनएफएचएस सर्वे का मैं डेटा को रिपीट यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, बट वी नो ऑल दोज फिगर्स। उन फिगर्स को अगर हमें टारगेट करना, उन फिगर्स में इंप्रूवमेंट लाना है, सो माय टुडेज like my this thing will be that we must focus on bringing them into workforce and making all these women economically independent. So thank you so much, Dr. Sunil. So this was just my message, simple message. और उसके बाद all best wishes to you, the work which you are doing. Thank you so much, sir, and thank you so much for your words of wisdom and advice. I think we will take it forward into the next session of intersectoral. एक बहुत साल पहले सर एक लैंसेट में आर्टिकल आया था, डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. If that was probably, I think, if I am not mistaken, about 10 years back, ये Lancet का publication था, and what you're saying is exactly that. That if the women develops in a way of independence to travel, to mobility, livelihood, decision-making power, all this leads to women in workforce. And you have very aptly put it together. There could be schemes, there could be programs, but how they impact and what life changes in the health and well-being would be the greatest thing that happens. And we will continue to seek your advice and guidance. Don't think that this is the last time, right? But thank you so much, sir. And with this, we take a break for 10 minutes, and I humbly request, please be back in 10 minutes so that we can finish the next session in an hour's time. Thank you very much. Thank you. Thank you, the audience. Thank you, sir. Thank you for this.
तो बस साथी बन गए। कब आए? 17 से ज्वाइन किया, छोड़ दिया था मतलब फोटो कितने बदलेंगे ये सोचिए। फोटो भेज दो खींच जो भी होगा। हाँ जी आगे के बाद से हमें नंबर भेजिए, फिर प्लान में देखिए जो नई वाली अरे पेपर मिल कॉलोनी कहाँ है और वाले कॉलोनी कहाँ है, बहुत अच्छा है। वहीं चले चलिए। How are you? Long time. I know. Oh, अच्छा बस अंजलि को जानते हैं हाँ।
Humbly requesting everybody to come back, please. And you can carry your tea and coffees back into the room. Thank you. Amit, 1 minute. And Neeraj. And Neeraj, मेरे को वो पेपर ला देना बेटा, very quickly. SRLM से है, पंचायती राज से और So let's start this session, please. May I request the moderator, Shri Alok Kumar ji has set the stage for us for the intersectoral component, and I think let's carry it forward now. And may I request the moderator of this session, which is no other than Medha Gandhi ji. She is the one who is the brain behind what MAMTA does or doesn't do, right? So she gives us all kinds of challenges. So I'm going to throw her into the challenge today, right? To moderate this session. बच्चे नहीं कह रहे, आप कह रहे. So let's call the panel. May I humbly request Dr. Sangeeta Srivastava from the Directorate of Family Welfare. Dr. Sangeeta Srivastava. Then may I request Dr. Rinku Srivastava, Dr. Prajapati, Shri Pradeep Kumar, Joint Mission Director, State Rural Livelihood Mission. Sir, please, on the dais, please, sir.
Mrs. Pravina Chaudhary, Joint Director, Panchayati Raj. Can somebody from MAMTA team check if Dr. Sangeeta Srivastava is here? I did see her around here. She'll be joining soon, right? So I just hand over for this session to, she's not here right now. Right? She's not here right now, right? So line ministry se Mekhal Panchayati Raj se, right? And plus you have from State Rural Livelihood Mission, right? SRLM. These two are present here. Good afternoon, everyone, and thank you very much. मैं मैम को सुबह बोल रही थी कि जो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, उससे उन्होंने इस रूम में इतनी एनर्जी भर दी और सभी लोगों ने इतना एंगेजिंग वे में फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करी। और अगर इस तरीके से हम लोग हर समय बात करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों की परमिशन से और पैनल की परमिशन से मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे साथ में स्निग्धा, रूपसी और पवन है, उनको भी अगर हम स्टेज पे बुला लें तो एक अच्छा सा इंटरैक्शन रहेगा। तो आप लोग तीनों भी आ जाइए। थैंक यू। आप लोग बीच बीच में भी बैठ सकते हैं। नहीं, वो लोग मिक्स होके बैठ जाएंगे। आ जाओ। और आप लोग बीच में कभी भी जब भी कुछ बोलना चाहें, जब हम लोग सवाल जवाब कर रहे होंगे तो प्लीज फील फ्री टू। जैसे आप लोग एक चीज मैंने देखी थी, जब आप लोग पिछले वाले सेशन में हाथ उठा रहे थे ना, तो आप लोग का हाथ ऐसे उठा था, तो आगे से तो किसी को नहीं दिखा था क्योंकि मैं आपके पीछे बैठी थी, तो इसलिए मुझे आपका हाथ दिख गया था। पर अगर हम यंग लोग अगर हाथ जबरदस्त नहीं उठाएंगे तो फिर आवाज कैसे निकलेगी, है ना? तो ये जो हमारा सेशन है, इसका प्राइमरी पर्पस ये है जो पिछले सेशन में आलोक कुमार जी भी बोल रहे थे कि अगर हम परिवार नियोजन, अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात केवल स्वास्थ्य के रूप में करेंगे तो उसका दायरा थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। और खास तौर पे अगर हम एनएफएचएस का डेटा देखें, जैसे राजीव शेयर कर रहे थे, और जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यंग पीपल अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिसीजंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलके और डिफरेंट आउटरीच मैकेनिज्म्स को हाथ में लेकर के किस तरीके से एक्सेस बढ़ा सकते हैं और डॉक्टर रिंकू का काम आसान बना सकते हैं। तो मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत समय से, और आपको सिरसा के समय से जब से जानते हैं, तो you have been a champion of innovation. You have been a champion of ensuring that boys and men are involved in conversations, they're involved in service delivery. तो उस पे हम और क्या कर सकते हैं, keeping in mind the points that younger people are now talking about, और
किस तरीके से young people can support us, किस तरीके से we can invigorate the system with UP leading on this economy agenda, हम किस तरीके से ये ensure कर सकते हैं कि there is more active engagement with boys and girls, with men and women, and what are the kind of innovations we can bring into our program to make our outreach more robust as well as our service delivery more robust. So मेरा आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो काफी डिफरेंट एज ग्रुप को भी कवर कर रहा है. सो प्रेजेंटली सिंस हमारे बगल में अभी डिग्री कॉलेजेस के बच्चे बैठे हुए, तो आई विल टॉक पर्टिकुलरली अबाउट दिस सेक्ट. यहाँ पे देखें कि जैसे कि इनोवेशन की बात की, एंड सिप्सा सालों से इनोवेशन के लिए ही जाना जाता था. उसके नाम में ही था कि स्टेट इनोवेशन इन फैमिली प्लानिंग. तो ऑल्दो एनएसएस का जो प्रोजेक्ट है हम लोग 3 साल से तो रन कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ द कोविड वो चीज बीच में काफी वैसे हो गई थी, काफी कुछ ऑनलाइन आ जाता है. ऑनलाइन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. तो जब तक हम पर्सनली आमने सामने नहीं मिलते तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं. एंड मोस्ट ऑफ अस आर ट्रेनर इन वेरियस कैपेसिटी. तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन. एंड पर्टिकुलरली फॉर द फैमिली प्लानिंग मैं कहूँगी वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है. कि जब आपके सामने कोई आता है, वो जो हिच है वो तभी खुलती है जब आप उसको एक सपोर्ट देते हैं. तो आई थिंक फॉर दैट ठीक है, डिजिटल इंटरवेंशन हम लोग को लगता है कि यस दैट इज वन ऑफ द एरिया. इनफैक्ट आई रिमेम्बर 5 years बैक व्हेन मिस्टर पंकज कुमार वाज देयर, वी वर थिंकिंग ऑफ हैविंग वन फैमिली प्लानिंग ऐप. और उस समय पे वी जस्ट वांटेड कि अगर जो भी यूथ है उसको सारी नॉलेज मिले. बट वी आल्सो अंडरस्टैंड, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, स्निग्धा. क्या होता है कि वन साइडेड इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो we don't know कि उसने ठीक से पढ़ी है कि नहीं. So at that time we were thinking कि we should have some module sort of thing, and after reading that then they have to give the question and answer. So we should know कि yes they have gone through and they have read it, and accordingly they will progress. So that was one of the thinking at that time. And we were also thinking with the commodity supply at their doorstep. So that was the idea. Abhi tak we are not able to actually mature it, because in the meantime with the COVID, what we realized, if we give the information on the virtual platform, it is also the same good thing, like people are actually learning and everything, and all age group they were doing. So for this, I think सबसे पहले हमें ये समझना है कि आप क्या चाहते हैं. हम लोग प्लान करते हैं, सारी चीजें हैं, और उस समय पे इनफैक्ट आई एम सॉरी फॉर दैट, जब डीजी मैडम वाज सेइंग एंड शी आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, एंड सिंस आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज एट दैट टाइम टीचर्स वर रेडी एंड इनके में हिच है. तो आई थिंक ये जो हिच है ना, हम बार बार बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स के लेवल पे हिच है, टीचर्स के लेवल पे हिच है, कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है इनके लेवल पे भी हिच है. ये भी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछते. ठीक है, तो ये चीजें हमें आपसे समझनी पड़ेगी. एंड यू आर वेरी राइट, एंड आई थिंक डॉक्टर मेहरा इज ऑल्सो राइट. व्हेनेवर वी हैव टू प्लान समथिंग वी हैव टू इन्वॉल्व देम, जो कि हम बाकी चीजों में करते हैं, बट समहाउ इन द यूथ वी आर मिसिंग. सो डेफिनेटली वी आर टेकिंग दैट क्लू. सो विद दिस आगे और कुछ होगा तो बताते हैं. बिल्कुल. No, that's a very fair point, and I do think we have to figure out ways and means of having a more meaningful engagement with young people. एक है thought मेरे दिमाग में, but I'll come back to that later. प्रदीप जी, आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को इतने सालों से स्वास्थ्य पे काम करने की इतनी आदत है कि हम हर चीज को स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं. और आज सुबह बहुत अच्छे से ये बात हो रही थी कि जब एक इंसान, नॉट जस्ट अ यंग पर्सन, कोई भी अपनी लाइफ में कोई हेल्थ डिसीजन के बारे में सोचता है तो वो नेशनल इंडिकेटर्स के हिसाब से नहीं सोचता है, वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है ना, कि इससे मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये डिसीजन कैसे होगा. तो ये जब हम काम करते हैं तो उसमें चाहे हम रूरल एरिया में काम करें या अर्बन एरिया में काम करें,
ये कॉग्निजेंस रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। और आपने महिला स्वयं समूह के साथ में काफी काम किया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि उस एरिया में काम करके आपकी क्या की लर्निंग्स रही हैं जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और किस तरीके से हम उनकी नीड्स को, जो हेल्थ रिलेटेड नीड्स हैं, जो फैमिली प्लानिंग रिलेटेड नीड्स हैं, जो यंगर वुमेन इन एसएचजीज हैं, उनके साथ में किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। हम लोग जब अप्रोच करते हैं तो इसी व्यू से करते हैं कि हम हेल्थ लेयरिंग ऑन एसएचजी करें। आपसे हम जो सुनना चाहेंगे वो ये होगा कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वेयर डू दे रेट हेल्थ इन देयर इश्यूज ऑफ प्रायोरिटी एंड हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड टू दैट नीड। हेलो, देखिए हम लोग जो मिशन हमारा है वो 70 लाख फैमिली के साथ काम कर रहा है। 70 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं हम लोगों से, और हम सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उनके काम करते हैं। और जैसा कि अभी आलोक सर ने भी बताया था कि बीसी सखी एक उन्हीं महिलाओं से बीसी सखी निकल के आई हैं जो एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी काम करती, जस्ट लाइक बैंकिंग का काम करती है। कभी सोचा नहीं था कि गांव की जो महिला घर से नहीं निकलती थी वो एक बैंकिंग का काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, एम्पावर्ड के लिए बहुत बड़ी, महिला एम्पावर्ड के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से अभी जैसा मैंने बताया था कि बिल कलेक्शन, जो विद्युत बिल कलेक्शन है उसको कलेक्ट करती है, तो उसमें भी 3-4 गांव में एक महिला समूह की है, वो काम करती है। तो ये बहुत सारे काम है जो घर से जब महिला बाहर निकल के काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सी चीजों को उसे समझाने की जरूरत है। वो इतना एम्पावर्ड हो चुकी है कि फिर उसे एजुकेट करने की, फिर उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है। जब घर से बाहर निकलती महिला तो वो जानती है कि फैमिली प्लानिंग कितना महत्वपूर्ण है उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए, और उसके जो और लोग उससे जुड़े हुए उनके लिए। तो ऑटोमेटिकली वो एजुकेट होती रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे हमारे यहाँ मैंने ये हमारे मिशन की ये धारणा है कि जब भी उनकी मीटिंग हुआ करती हैं तो मीटिंग में हम लोग इन इशू को, हेल्थ के इशू को रखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं और ये भी बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये इश्यूज हैं कि इनको अगर आप डिस्कस नहीं करोगे, बहुत से इशूज जो हेल्थ के हैं वो डिस्कस नहीं होते हैं, और ख़ास तौर से रूरल एरिया में, रूरल फैमिली में। तो जब वो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसमें जो मीटिंगें होती हैं, कहीं 15-20 महिलाओं का या 1000-2000 महिलाओं का जब बड़ा ग्रुप होता है, उसमें जाके जब ये डिस्कस होते हैं, उसमें आईसीडीएस के वर्कर भी आते हैं, हेल्थ के वर्कर भी आते हैं, वो भी अपने पॉइंट रखते हैं, वो भी अपनी योजनाओं को रखते हैं। तो इससे अच्छा माध्यम रूरल में मुझे लगता नहीं है। तो हम लोग भी यहाँ से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप लोग इन सभी हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें। निश्चित इसका असर फील्ड में दिखाई पड़ रहा है और आगे और भी होगा। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि पंचायत कितना इम्पोर्टेंट फोरम है, पर पंचायत के साथ किस तरीके से मीनिंगफुली एंगेज किया जाए ये शायद अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं। और कोविड में जो रोल पंचायत मेंबर्स ने प्ले किया है उससे एक थोड़ा रिकग्निशन आया। अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस भी देखें, उसमें भी पंचायत का रोल बहुत उभर के आया है। आपसे जो सवाल मैं पूछना चाहूंगी वो ये है कि हमने हेल्थ सर्विसेज की बात करी, सर ने एसएचजी वुमेन के सारे बारे में बात करी। आपसे मैं थोड़ा ये बात करना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जो यंग पीआरआई मेंबर्स हैं, हम उनके साथ में किस तरीके से हेल्थ पे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे उनका लिंकेजेस एमएलएस के साथ होता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इलेक्टोरल कनेक्शन
especially with regard to even male panchayat members getting engaged and reaching out to boys and men? देखिए, सबसे पहले तो जो एक पंचायती राज इज नॉट अ डिपार्टमेंट. पंचायती राज या पंचायती राज इज एन इंस्टीट्यूशन. We are not a department, we are running institutions, and that too institutions at the grassroots level, which are involved with everything being carried out at the grassroots level. And that was very much evident during the COVID period. Gram Panchayats, health department very well know that Gram Panchayat were the main data providing units at that time. How many people have come from the other states, how many are staying, how many are COVID affected, everything we did, which I think we are very proud of as a department which looks after those institutions. तो पंचायत में सबसे बड़ी बात यही है कि एक ये मिसकंसेप्शन है कि पंचायत ये करेगी, पंचायत वो करेगी. नहीं, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, बहुत सारे फोरम्स पे कहती हूँ कि we people have to go to पंचायत. चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जाए, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट जाए, चाहे अन्य जो भी डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें जाना पड़ेगा पंचायत के पास. अभी स्थिति ये है कि आप में से पता नहीं जीपीडीपी का नाम लोग सुना है किसी ने? Few of them. GPDP is the basic thing. ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो प्लान जो अभी हम लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं, इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस. GPDP is the main tool of this intersectoral convergence. But unfortunately, we are sorry to say कि उस GPDP के प्लान में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन की योजनाएं जो हैं या उससे रिलेटेड वर्क्स ही शामिल होते हैं. हेल्थ का एनुअल हेल्थ प्लान किसी जीपी के लिए क्या है, वो उस प्लान में शामिल नहीं है. एजुकेशन का हेल्थ एजुकेशन प्लान उसकी क्या फंडिंग है उस जीपी के लिए, या वो कितना खर्च करेगा, उस पैसे से क्या एक्टिविटीज करेगा, वो जीपीडीपी का प्लान अभी भी नहीं है. तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं बार बार कहूंगी, और ये अच्छा फोरम है कि वी हैव टू गो टू पंचायत. हमें जब अभी मैं देख रही थी, एक और मेरे दिमाग में सवाल आया था कि यूथ का, अब यहाँ पे ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स, यूथ का एज ग्रुप क्या माना जाता है? तो यूथ में क्या एज ग्रुप माना जाए? 15 to 24. नाउ अभी प्रदीप जी जो है NRLM और BC सखी की बात कर रहे थे. हमने अभी 58,000 ग्राम पंचायतों में अराउंड 21 to 30 के बीच में पंचायत सहायक अपॉइंट किए, और वो एक ऐसा वाइब्रेंट हमारा टारगेट ग्रुप है जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है बहुत सारी चीजों के इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस में. और जैसे अभी बात हो रही थी कि हम लोग भूल जाते हैं कि रूरल एरिया में जो यूथ है वो कॉलेज भी ना जाने वाला यूथ भी है, जो शायद हो सकता है 10th और 12th ड्रॉप आउट्स हैं. तो हमें उन्हें भी देखना होगा कि हम उनके साथ पंचायत के थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी और डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या बेहतर करा सकते हैं उनसे. और जहां तक पंचायत मेंबर्स की बात है, पंचायत मेंबर्स में क्योंकि जो 15 to 24 वाला ग्रुप तो नहीं है, इट इज बियॉन्ड 25, तो इसलिए उनको हम लोग लगातार ट्रेनिंग्स के माध्यम से ये बताते रहते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट आपके ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते हैं, और ये डिपार्टमेंट के जो भी प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं वो पंचायत में आएंगे, वो आपकी बैठक में आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. तो सबसे बड़ी बात जो है वो तभी अपना एक्टिव रोल प्ले कर पाएंगे जब हम उनके पास जाएंगे. दैट इज द क्रक्स ऑफ द
thing which you were talking about. Thank you. No, that's very, very helpful. And I do think that we need to also meaningfully build that engagement, especially with health. There is an opportunity and there can be more opportunities. Sir, आपके पास आने से पहले मैं इन तीनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी. सर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करी, मैम ने पंचायत मेंबर्स के बारे में बात करी. मैं आप तीनों से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग सोचते हैं कि हाँ आपको किसी के पास से इंफॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए या आपके रिलेटिव्स हैं गांव में, जो भी अगर वो लोग सोचते हैं कि हाँ उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या उनको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, तो उसमें क्या परसेप्शन है ऑफ गोइंग टू और बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप or reaching out to panchayat members, or what do you think they can do to support you so that we are also able to close that loop from that point? So आप तीनों में से जो भी कोई जवाब देना चाहे. थैंक यू मैम. जैसा कि गांव की बात हो रही है तो हम लोग एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनके पंचायत सहायक का नाम क्या है. ये सबसे बड़ा प्रश्न है. काम क्या कर रहे हैं, क्या काम है उनका, ये तो सॉरी बीच में एक सवाल पूछूंगी. और आशा दीदी और आंगनबाड़ी दीदी, उनके बारे में पता होता है? उनके बारे में पता होता है क्योंकि वो आती हैं, टीकाकरण करती हैं, भाई पोलियो की ड्रॉप पिलाती हैं, तो महिला घर पे रहती हैं, वो आती हैं, तो कहीं ना कहीं सारी आशा और एनएम के बारे में सबको पता होता है. जहाँ तक आपने पंचायत सहायक की बात की और उन सारी चीजों की बात की, तो उसमें मैंने कई बार गांव में देखा, क्योंकि जब तक मैं गांव में रहा हूँ तो ऐसे लोग बहुत कम आते हैं कि एज अ सर्वे करने. और मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि पंचायत और एजुकेशन को अगर हम ऐड करें तो गांव में जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, आई थिंक 1992 में जो सर्व शिक्षा अभियान आया था तब से चल रहा है और आज आई थिंक 30 साल हो चुके हैं उसको. तो स्थिति सुधरी है, काफी सुधरी है. बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, खाने को दूध केले खाना अच्छा मिल रहा है. लेकिन जो उसकी अव्यवस्था है, जैसे कि अगर हम उसके क्लासरूम्स की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, रसोई की साफ सफाई की बात करें, वॉशरूम्स की बात करें, तो वो आप लोग शायद हमसे बेहतर जानते हैं कि उसकी स्थिति थोड़ी अभी है खराब. तो उसमें मेरा ये आइडिया या सुझाव ये था कि अगर हम लोग को एक ऐसा काम करें कि जो हमारे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो दूसरे कॉलेजेस में जाएं, जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, और विजिट करें और वो वहाँ की जो कॉलेजेस की हैं वो 2 से 3 एक जो उनकी अच्छाइयाँ हैं कॉलेज की वो अपना नोट डाउन करें, और 2 से 3 जो उनकी लगती है कि ये समस्याएं उनके कॉलेज में हैं तो वो नोट डाउन करें. तो इससे, क्योंकि आप जब किसी दूसरे के कमियों को निकालते हैं तो सबसे पहले अपना देखते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है. तो एक्चुअली जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि एक पैनल डिस्कशन होना चाहिए टीचर्स का, और फिर उसमें ये सारे मुद्दे निकल के आएंगे, और फिर जिसका कॉलेज अच्छा हो, जिसकी साफ सफाई अच्छी हो, उसे गवर्नमेंट रिवॉर्ड दे, पुरस्कृत करे. ये मुझे लगता है ऐसा अगर हो तो ये इसमें सुधार आ सकता है स्कूल की व्यवस्था में. बस यही कहना चाहूंगा. धन्यवाद. मैडम, इस पे बस क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनके बारे में लोगों में थोड़ी और जानकारी बढ़ पाए, और हम भी किस तरीके से सपोर्ट कर सके कि थोड़ा प्रोएक्टिव एंगेजमेंट उनकी तरफ से भी हो? पंचायत सहायक मुझे नहीं पता आपने गांव कब छोड़ा? नहीं I just want to know. एक्चुअली मैंने जब मैं 6th क्लास में था. हाँ, तो आपने बहुत पहले छोड़ दिया. पंचायत सहायक जो है वो 1 साल का अचीवमेंट है. They were posted last year only. तो इसलिए ऐसा नहीं है. पंचायत सहायक का नाम हर गांव पंचायत के पंचायत सचिवालय पे लिखा होता है, और ही इज द वन जो ऑफिस अब ऑफिशिएट करता है वहां पे. तो यू लेफ्ट वेरी अर्ली, इसलिए अब जाइएगा तो आपको मिलेगा वो. और दूसरी बात है कि जो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि पंचायत जो है वो मेंबर्स हुए या प्रधान हुए, जो वो बैठक कर रहे हैं, चाहे मासिक बैठक करते हो या ग्राम सभा की बैठक करते हो, तो वो सब एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की चीज है. और ये हम लोग देखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी खाली उन चीजों के लिए ज्यादा होता है कि जहाँ पे लगता है कि हाँ पेंशन
की योजना में हमें लाभ मिलना है तो शायद वो उससे रिलेटेड मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। किसी सोशल उसके लिए कि हाँ किसी ऐसी मुद्दे पे चर्चा करनी है कि भाई किशोरियों की हमें हेल्थ पे चर्चा करनी हो, या हमें किसी ऐसी महिला सभा को हमने बुला रखा, उसमें इन्वॉल्वमेंट हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से बढ़ाएं। ये मतलब अब ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य कह लीजिए या अपनी सोच कह लीजिए कि हमें उन चीजों में गांव में ज्यादा रुचि है ग्रामवासियों की जिसमें कोई व्यक्तिगत लाभ इन्वॉल्व हो। तो हम लोग ये लगातार कोशिश करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से और अन्य विधाओं से कि लगातार उनसे उनकी क्षमता वर्धन करते रहें, जिससे ग्राम पंचायत मेंबर्स भी विभिन्न चीजों को जाने और डिपार्टमेंट्स का पहुंचना सबसे जरूरी है पंचायत में। मैं बार बार इस बात को हमेशा दोहराऊंगी। So coming to you on a completely unrelated point, which is around medical education, nursing education, paramedic education. So there is a lot of conversation we have about how community needs to be more aware of what are the services being offered. And I think on that, we've made significant progress, whether it comes to overall awareness about health services, and if we talk about family planning, even awareness about methods and where to go to get them. एक पॉइंट आपने भी सुबह बोला था और दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला था, that how do we sensitize the providers while they are getting educated and when they are providing services to become more sensitive to be providing services. And we have to be mindful कि doctors, nurses किसी और community से तो नहीं आ रही हैं, जहां हम लोग सब रहते हैं वहीं से आ रहे हैं. So our individual growth and development and our biases come as part of it. So what is it that we can do, and where can people like you become champions to work with medical education at large, not just at the state, but at across the country, to be able to say what are the changes we need to bring about in the curriculum, nursing, medicine, paramedicine, to bridge the gap between the provider and the client. मैं patient नहीं बोलूंगी, I'll just say client, because we need to look at a more holistic approach. See, madam, मेडिकल एजुकेशन को एक टर्शरी लेवल और एक जनरल तरह से बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के तरह से लोग मानते हैं। आप वहां जाएंगे और आपका वो, तो जो हमारे टीचर्स, चाहे वो मेडिकल वाले हैं, चाहे वो नर्सिंग वाले हैं, चाहे वो पैरामेडिकल वाले हैं, जब आपको कम्युनिटी लेवल पे बात जब करनी है तो सबसे पहले आपको डी लर्न करना पड़ेगा। आपको अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा जहां आप बात कर सकते हैं। मैंने आज सुबह जब कहा कि हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को गांव में भेजेंगे, देयर इज अ डिफरेंस। पेशेंट जब हमारे यहाँ आ रहा है तो वो अपनी कंप्लेंट लेके आ रहा है, अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। जब हम वहां जा रहे हैं तो उसके पास वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम उससे बात करेंगे। हम इस प्रकार से डाइस पे नहीं बैठे होंगे, हमारे सामने कोई टेबल नहीं होगी, हम उसके पलंग पे बैठ जाएंगे, हम उनके स्टूल पे बैठ जाएंगे। उनने कहा साहब चाय वाय तो पूछते नहीं है, ठीक, मट्ठा पियेंगे, दूध पियेंगे, पिला दो भाई। और उनके लिए दूध और मट्ठा जो इतना बड़ा गिलास होता है जिसको देखते ही आदमी बेहोश हो जाए। हम लोग तो 100-150 ग्राम वाले उसमें से अपने आप को सैचुरेट कर लेते हैं। तो हमको अपने आप को उस लेवल पर उतारना पड़ता है। यू रियली एंजॉयड एट द एंड ऑफ द डे, यू रियली एंजॉयड दैट यू हैव डन। और जब आप उनसे उस समय जब बात करते हैं तो उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसी हिसाब से आप समाधान करते हैं। इवन आई हैव गॉन टू विलेजेस। जो स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे हैं, हम जब गांव में हम अपने स्टूडेंट्स के बैच को ले जाते हैं तो वहां पर जब इनसे जब बात करते हैं तो उस समय हम उनसे हिस्ट्री लिखने के लिए हमने कहा, तो नॉर्मली जो हिस्ट्री लिखते हैं, पेशेंट केम विद कंप्लेंट्स ऑफ, तो उन्होंने उनको अंदर वही आदत पड़ी थी कि कंप्लेंट्स ऑफ, तो उनको बताना पड़ता है बेटा देयर इज नो कंप्लेंट,
You said that I went there, I interacted with them, उनसे ये discuss हुआ, ये discuss हुआ. So these are the reforms that we need to bring in our teaching curriculum as far as community work is concerned. And also we need to have one place, जो मेरा सर बोल रहे थे कि हमको एक अपने यहाँ एक इस प्रकार का ये हो रहा है कि वो पेशेंट के रूप में नहीं आ रहा है, उसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, उसे कोई दवाई भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ बात करना चाहता है. और बात करने के बाद उसको जो अवेलेबिलिटी है, प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि जब वो आता है तो ये नहीं चाहता कि लोग उसको देखें, और वो इस क्या बात करने गया, वो क्या लेने हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटल दिखाने में गया, सिर में दर्द किसी की भी हो सकता है, पेट में दर्द किसी की भी हो सकता है, तो उसको पास आने में वो गाना है ना, तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो वो आराम से उसको उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, मैं मेडिकल कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज जाने के बाद में जब उसने बात की एक फ्रेंडली से, मेरे अरे तुम बेटा वहां चलो, वहां तुमसे बात कर, then he or she will definitely bring out, and that will make the, and that is not only treating that or solving out the query of that particular person, it is also teaching our nurses, paramedic and teachers how to behave with these people, how to interact with people, and how to solve it. These are the things. No, that's a fabulous point. Ma'am, I will ask you a point building off what Ravina ji was saying, that the GPDP offers an opportunity, a platform for engagement, and the panchayats also have the ability to engage, which we have seen in COVID. Looking at it from the health family planning perspective, it's not that, health and family planning initiatives have not worked with SHGs or have not reached out to panchayats. But what do you think could be additional steps that can be taken to strengthen that linkage? And what could be the support that probably the civil society NGOs can offer to you? So after that, I'd love for both of you also to reflect on this, like what is the kind of support that will be helpful to bridge that gap? अभी जो हेल्थ के साथ है, जहाँ पे हम PRI डिपार्टमेंट से अगर आप कहें, एक आप सभी ने सुना होगा VHSNC का हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और उसमें आपका एक मेंबर उसमें होता ही है, और दैट इज फॉर ऑल एस्पेक्ट, इट इज नॉट ओनली फॉर हेल्थ, अदर एस्पेक्ट्स आर आल्सो कमिंग. अभी दूसरी चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं, इनफैक्ट अभी हमारी मिस्टर अनुज से हमारा सर से इंटरेक्शन भी हुआ था. रिसेंटली PRI डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, around 100 women प्रधान बुलाई थी, and they called health department also to participate. And यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि आप जिसे कहते हैं ना कि दिस इज गुड, ये कह रही है ना जैसे कि हमारा PRI इज अ इंस्टीट्यूशन, तो उनके यहाँ जाना पड़ेगा, तो हम भी वहाँ गए तो वहां जाने के बाद ही वी मेक अ प्लान कि कैसे हम और ज्यादा उसको इंटीग्रेट करें. तो अभी स्टार्टिंग ही है कि लाइक हम लोग 3 चीजों पे और अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं, कि जो हमारे प्रधान है उसमें एक तो प्रगतिशील प्रधान, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप सबको ट्रेन करते रहिए, सेंसिटाइज करते रहिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं आता है ना अकाउंटेबिलिटी के साथ ही आप जब उसको अप्रिशिएट करते हैं तभी चीजें वर्क करती हैं, और वो मुझे लगता है हर सिस्टम में वर्क करती हैं. तो एक वो एरिया है. दूसरा एक स्टेट टास्क फोर्स जैसे होती है वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे विलेज के उसमें करेंगे. एंड द थर्ड वन इज कि एक्चुअली प्रधान को भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, ठीक है. हम लोग समझते हैं कि नहीं, जैसे मैंने सुबह जिक्र किया था कि खुशहाल परिवार दिवस है, ये बहुत सारे हमारे हेल्थ के प्रोग्राम्स होते हैं, प्रधान आते हैं, इनॉग्रेट करते हैं. तो जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हमारी स्कीम्स क्या हैं, जब तक हम उन्हें तब ही जाके वो क्वेश्चन कर पाएंगे. एंड प्रधान जब बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं कि हमारे HWC पे अगर किसी चीज की कमी थी तो उन्होंने अपने फंड से खरीदा. तो यही चीज, तो ओन द कम्युनिटी जो उनके अपने एरिया का है, जब वो ओन करेंगे, और वो करते भी हैं,
तो उसी पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। लेट्स सी 2 डिस्ट्रिक्ट पे वी आर थिंकिंग। तो C3 के साथ क्या लर्निंग होती है डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बताएंगे जी। SHGs का मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है NRLM के साथ, एक क्योंकि हेल्थ कंपोनेंट नहीं था उसमें, स्पेशली फैमिली प्लानिंग। तो आई रिमेम्बर 2-3 years बैक व्हेन केयर वाज डूइंग, तो उस पे हम लोगों ने हेल्थ का स्पेशली फैमिली प्लानिंग डाला था। एंड उस पे भी वी आर थिंकिंग कि कैसे हम SHGs के साथ जुड़े। इनफैक्ट माय MD मैडम जब ये शगुन की बात थी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी वांटेड कि हम इसको SHGs को दे दें। तो ये हुआ कि उसी समय पे आप लोगों को वो मिला था, ये जो मिड डे मील। तो ये हुआ कि वो ऑलरेडी काफी ओवरवर्क्ड थे। तो बट वी आर थिंकिंग ऑन इट, तो जैसा होता है वी विल लेट यू नो। आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, फैमिली प्लानिंग की बात करें, लार्जर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, सो आपके हिसाब से which department has a role to play in that, and where do you think or who do you think would be your go-to person, या कहाँ आप लोग जाना चाहेंगे? इंटरनेट आप लोगों ने सुबह बताया, and उसके लिए भी there can be ways and means of engaging, but should that be a person, a department, an institution, what would be your point of contact, or where do you think कि वो एक सीमलेस टच पॉइंट्स में जिससे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए या सर्विसेज मिल पाए? आप कुछ कहना चाह रही थी? थैंक यू मैम। एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने माँ को बताना चाहूँगी, क्योंकि पहले हम सब कुछ स्टार्टिंग हमारा वहीं से होता है, और हमारे फैमिली में ऐसा इको फ्रेंडली माहौल नहीं होता। अगर पापा सामने है तो मैं उनसे नहीं कुछ कर सकती, अगर कुछ भी हो रहा है तो मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल सकती। मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद ही मुझे बोलना होता है। तो पहले हमें वहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि वुमेन को एजुकेट करें, जिससे कि तो इसमें फिर मेन को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी नहीं हुआ? मैम मैन को एजुकेट करना पहले मैं माँ को ही बताऊंगी। दर्द होता है तो पहले हम लोग माँ चिल्लाते हैं, उसके बाद पापा के पास आते हैं। तो फिर पहले हम लोग उनके पास जाएंगे, तो उन्हें एजुकेट करेंगे तो वो फैमिली में इको फ्रेंडली माहौल बना सकेंगे, तो उसके बाद आगे हम कहीं जा सकते हैं। हेलो, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं ऑब्वियसली मम्मी के पास तो नहीं जाऊंगी, पर मैं प्रिफर करूंगी कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मेरी बात समझ सके। ऑब्वियसली हम फैमिली में ये चीजें बहुत जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है वो चीज हमारे कहीं कैरेक्टर पे ना हावी हो जाए या हमारे लिए कोई परसेप्शन ना बन जाए। तो मैं चाहूंगी कि स्कूल्स में कुछ ऐसा हो, सरकार करती है, कहती है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्कूल में काउंसलर रखे जाएं, बच्चों को अच्छे गाइडलाइंस प्रोवाइड जो कर सकें, लेकिन मेरे स्कूल में कोई नहीं था, तो मैं चाहूंगी कि इस पे भी ज्यादा थोड़ा वर्क किया जाए। और रूपसी की बात में मैं ऐड ऑन करते हुए कहूंगी कि हाँ, वुमेन के एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, मदर के एजुकेशन पे और इवन ब्रदर के भी एजुकेशन पे, क्योंकि वुमेन एक मेरे पास स्टोरी है, अगर मैं थोड़ा सुना सकूं कि कैसे ये चीज इफेक्टिव है। मेरी एक फ्रेंड है, वो सेक्सुअल अब्यूज से गुजरी, और मतलब वो इसका मेंटल हेल्थ इतना डिस्टर्ब था कि वो सुसाइड करने वाली थी। तो उसने फिर उस स्कूल में पूरी बात फैल गई और उसके मदर को पता चली। उसकी मम्मी थोड़ी एजुकेटेड थी, इन सब चीजों को लेकर के सेंसिटाइज्ड थी, जिसकी वजह से उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि दीज थिंग्स आर नॉर्मल, अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब नॉट इन दैट सेंस, हाँ, उसको रीअश्योर किया, उसको सपोर्ट किया, और उसके बाद उसके साथ एक्शन भी लिया कि अगर तुम चाहते हो, अगर तुम, तो हम लोग पुलिस के पास भी जा सकते, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो उससे थोड़ा काम फील हुआ। कहीं ना कहीं ये चीज जब हमें स्टोरी पता चली हमारे फ्रेंड सर्कल में, तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई,
मेरे मम्मी को भी पता होनी चाहिए थी। मैं अपने बेटी अगर मेरी होगी या इवन बेटा होगा तो मैं उसे ये चीजें जरूर बताना चाहूंगी कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये कहाँ तक मैटर करता है। ये जो काउंसलर वाली बात जो कही है इज वेरी गुड, और द बेस्ट काउंसलर would be your school teachers only, because if we post one or two counselor then you are going something, तो something is there, चाहे तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती होगी तो वो फिर भी उसको ये होगा। और इसी के लिए जब हम स्कूल का ये रखते हैं, स्कूल प्रोग्राम से रखते हैं जहाँ पर हम वी अब टारगेट 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे एग्जाम के लिए बिजी हो जाते हैं, तो वन कभी ना कभी तो 9th में, 10th में, 11th में रहते हैं, तो उनके साथ जब करते हैं और उनके साथ ही जब हम टीचर्स और उनको लेते हैं, तो आपके लिए घर पे मदर और स्कूल में टीचर्स, एंड दे कैन जज, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल दे कैन जज कि हाँ भाई ये चीज है। और जब एज ए व्हेन दे एक्ट एज काउंसलर तो वो धीरे से तुमको बुला करके पूछेंगे, देन यू ओपन अप। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चा शुरू में आता है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहीं से बाहर से ही जो है उसके टेंस होना शुरू हो जाता है, पर धीरे धीरे करके हो जाती है, आता है, नमस्ते भी करता है, हाथ भी मिलाता है, और सो दिस इज यू कैन डू दैट। पर एक तरीके से स्निग्धा ने हमारे पैनल का एक बहुत अच्छा समरी किया कि एज अ क्लाइंट, एज अ यूजर, उसके लिए चाहे पंचायत हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, उसका डिस्टिंक्शन नहीं है। फैमिली, कम्युनिटी, education, health is a seamless whole, and when it all comes together is when each citizen and each individual is able to exercise their health, their rights. And I think that applies not just to clients who come in, but even to us as individuals and our families. So I think आपने बहुत बढ़िया से हमारे लिए summarize कराया। डॉक्टर मेहरा अमित, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, is there time for questions from the audience or will that happen over मैम lunch? एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि जब काउंसलर की बात होती है तो कॉलेजेस में अगर हम लोग एक काम और कर सकें कि जो इंटर कॉलेजेस होते हैं, हाई स्कूल जी यहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ के स्टूडेंट के साथ जब कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग के साथ अगर हम एक काउंसलर रखें और वहाँ पे उसकी मतलब एक जो विमेन है, जो लड़की पढ़ रही है, उसको बुलाया जाए, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए और उसके ब्रदर्स को बुलाया जाए। कभी कभी ये होता है कि हम जब अगर इन सब पीरियड्स जैसी सारी चीज़ों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में या किसी समस्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो लड़कों को साइड कर देते हैं। हम अपने स्कूल लाइफ की आपको बात बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कॉलेजेस में एक मैम आई हुई थी, डॉक्टर मैम थी, तो उन्होंने कहा कि लड़के नहीं अलाउडेड हैं, सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं और वो उन्हीं की समस्या है, ये उन्हीं बताया जाएगा। तो मुझे लगता है अगर जब तक हम लोगों को, लड़कों को जानकारी नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं ये अधूरा रहेगा। तो हम ने बिल्कुल सही बात बोली और वापस स्निग्धा की बात पे जाऊंगी कि कोई भी इशू है वो एक इंडिविजुअल या आइसोलेशन में उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। सो फैमिली, उसमें पूरा फैमिली एज अ यूनिट, कम्युनिटी एज अ यूनिट, एंड देन starting with panchayat, coming to economic opportunities and education and health, जब तक एक वो seamless whole नहीं होगा हम उस पे आगे move forward नहीं कर पाएंगे। But thank you very much, this has been a very engaging session. आपके लिए मेरे दिमाग में एक पॉइंट है, वो हम अलग से लंच पे बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर मेहरा ने घड़ी दिखा दी। So thank you. Such an enlightening session and great to see the participation. I'll just request you to hold on for about 2 minutes. Can we pass the mementos, please? Can you all come on the dais? We will unfortunately, falsely not repeat the ones who have already got. Please apologize us, right? We have to be apologized. Start with the young man and then we carry on, right? उनसे पहले next one to the ma'am, please. I hope I pronounced her name. Are you Rupsi? Yes, that's for Rupsi.
हैं? हाँ, ताली बजाने में बहुत कंजूस है. I agree with that. Sir, please. Thank you so much for your participation. We'll have to skip the next two seats. Sorry. To Snigdha. इनके हाथ में पकड़ना और बोलना कि फ्लाइट में लेके जाएंगी. Thank you, dear. Thank you so much, Nida, for all your support and help. Thank you. Thank you so much. Thanks. So may I request Dr. Vikas to come and give the closing remarks and your final thoughts, and then we can close this session. Thanks, Dr. Mehra. And Dr. Mehra और अमित ने मुझे दो काम दिए. So पहला तो vote of thanks. So वो आसान है. So दोनों esteemed panels को I wanted to thank and participants also जिन्होंने बहुत ही enthusiastically आज के सारे sessions में discussion किया. But I think more than anyone else, I wanted to thank our guests of honors, Pawan, Snigdha, Roopsi, जो आज आए इस सेशन में और आप लोगों ने कैंडिडली अपनी बातें कही. सो आई थिंक दिस वाज अ रिमार्केबल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम अ प्रोग्राम पर्सपेक्टिव और इन जनरल आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं. एंड आई थिंक ये हमें थोड़ा सा और फोर्स करता है कि हम आने वाले ऐसे प्रोग्राम्स में और इफेक्टिवली एंगेज करें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू. दूसरा काम था समरी और वे फॉरवर्ड. सो आई थिंक दैट्स टफर बिकॉज आज बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही एंगेज्ड कॉन्वर्सेशंस हुई. सो मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ कि आज की जो कॉन्फ्रेंस या कॉन्वर्सेशन शुरू हुई तो हम सेकंड ऑर्डर इश्यूज से बात किए, बिकॉज यू नो हमने सबने NFHS 5 का डेटा देखा. देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन जनरल एंड पर्टिकुलरली आल्सो स्पेसिफिकली फॉर young people's access to modern contraception, their demand satisfaction, सब इम्प्रूवमेंट हुआ. तो हम आज सेकंड ऑर्डर चीजों पर बात कर रहे थे कि आगे क्या. सो उस पर्सपेक्टिव से पहला जो मेरे हिसाब से जो लर्निंग था कि फ्रेमिंग थोड़ी सी हमें और सुधार करने की आवश्यकता है, या सुधरी हुई है बट हम अपने दिमाग में उसको और इवॉल्व कर सकते हैं. फैमिली प्लानिंग बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यू नो इफेक्ट्स और पाथवेज रिक्वायर करता है. सो इफेक्ट की बात करें तो फैमिली प्लानिंग की आर्टिकुलेशन सिर्फ फैमिली स्पेसिंग, हेल्थ और यू नो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसीज और टीनेज प्रेगनेंसीज वो ही नहीं है. अगर हम ब्रॉडली अगर इफेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज जो कॉन्वर्सेशंस हुई मोर हॉरिजॉन्टल थिंग्स, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स, एम्पावरमेंट एंड यंग पीपल्स के पर्सपेक्टिव से व्हिच वाज रिमार्केबल एंड स्ट्रक मी. एस्पिरेशंस, यू नो आज जो बात हुई कि मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव में उस चीज में कैसे यू नो प्रोग्राम का रोल है और एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग का रोल है. आई थिंक दैट्स वन यू नो इवॉल्व्ड वे ऑफ थिंकिंग फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. प्लेजर की हम लोग बात नहीं करते हैं. So that's another thing which can sort of eventually become more mainstream in our articulation of the program. प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत वर्टिकल है. डॉक्टर रिंकू देखते हैं प्रोग्राम मिशन परिवार विकास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यू नो वी हैव फैमिली प्लानिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, बट हेल्थ सिस्टम्स का भी उतना ही रोल है और इफेक्टिवली डॉक्टर रिंकू एंगेज कर रहे हैं प्रोग्राम के साथ. ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, सप्लाई चेन, डेटा सिस्टम्स एटसेट्रा. बट आई थिंक एक स्टेप अहेड आज जो हम बात कर रहे हैं, नॉन हेल्थ सेक्टर्स का भी उतना ही रोल है. PRIs के साथ आज अब इस पैनल में हम बात कर रहे हैं, तो PRIs के साथ कैसे एंगेज करें, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कैसे रोल करें, एंगेज करें. सो उसका भी रोल है. सो थोड़ा सा तो हमारी फ्रेमिंग भी इवॉल्व हो रही है जैसे जैसे आज हम नेक्स्ट ऑर्डर की चीजों की बात कर रहे हैं. Now, in terms of next steps, I was trying to actually think कि क्रॉस कटिंग थीम्स क्या निकली आज के कॉन्वर्सेशन से. So वो मैं दो तीन क्रॉस कटिंग थीम्स की बात करना चाहता हूँ, and we'll see how we can evolve, you know, our joint programming, joint thinking as we move forward. So पहले दो तो बहुत स्पेसिफिक हैं. So एक जो चीज निकली थी आज सुबह की कॉन्वर्सेशन में काफी डीपली आई, लगभग हर सेशन में सुन रहा था कि डिजिटल को हम कैसे इफेक्टिवली लेवरेज करें.
digital both as an information source, because आज जो I think Pawan ने बोला कि internet पे हमारे पास सारी information available, so both as an information source but which is more suited and targeted to the needs of youth. So एक वो pathway है. दूसरी तरफ से डॉक्टर रिंकू के पर्सपेक्टिव से एज अ प्रोग्राम पर्सन हम कैसे इफेक्टिवली डिजिटल को यूज कर सकते हैं फॉर बेनिफिशियरी टारगेटिंग, आइडेंटिफिकेशन, डेटा, एंड आज एक सेशन में फॉलोअप की इंपॉर्टेंस की भी बात हुई, रिकमेंडेशन हुई कि फॉलोअप कैसे हम क्लाइंट्स के साथ करें सब्सिक्वेंटली, तो डिजिटल कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दैट. दूसरा इंपॉर्टेंट जो sort of cross cutting theme आया था, that was around leveraging current programming and current communication and outreach effectively for family planning services. So उसमें भी एक जो बात हुई कि typically हम client की सिर्फ बात कर रहे हैं. So what is the role of families? So अगर department की बात करें, department is already talking about something called a खुशहाल परिवार दिवस, तो जिसमें families की बात है to engage them in family planning conversations. Couples जो कपल्स की कॉन्वर्सेशंस पे कैसे हम और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो वो उसका भी डॉक्टर रिंकू ने एग्जांपल दिया कि सास बहू बेटा सम्मेलन, इट्स अ इफेक्टिव पाथवे. सो इट कुड बी फर्दर स्ट्रेंथन स्केल्ड अप. बट एक जो चीज आई जो कॉन्वर्सेशंस में कि अभी तक भी हम sort of more targeted conversations पुराने ढर्रे से करें. So how can we figure out more youth appropriate messages and messaging as a part of our outreach effort? So that's another thing which we want to think. But again, keeping in sort of line with what I said in terms of framing, कि नए partnerships क्या हैं अब outreach के लिए, जो हम institutions, colleges की बात करें कि उनके साथ हम effectively कैसे participate करें moving forward, both information के लिए और access to services के लिए. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ इवन लोअर लेवल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे काम कर सकते हैं. सो आई थिंक दीज वर टू लाइक themes which we have been focusing on, and there is an opportunity to actually strengthen it further. दो चीजें हैं जो थोड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है, जिसके लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, हो सकता है लर्न भी करना पड़े, which I felt was in that impromptu discussion which happened. So first one was actually changing norms, or sort of more appropriately normalizing family planning, sex education and other conversations as a part of what we do. And उसमें मेरे को डॉक्टर मनोज की बात स्ट्राइक की कि everyone has a role. उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसका रोल है, हेल्थ वर्कर का रोल है, आउटरीच वर्कर का रोल है या फैसिलिटी बेस्ड स्टाफ का, सबका रोल है और सबको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करना पड़ेगा. प्रोवाइडर्स को कैसे रेस्पेक्टफुल हो अपनी कॉन्वर्सेशंस में, केयर प्रोविजन में कैसे रेस्पेक्टफुल हो. फैमिलीज, स्निग्धा ने बोला कि फैमिलीज, मदर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, वो कैसे नॉर्मलाइज करें इन कॉन्वर्सेशंस को इफेक्टिवली, उसकी भी बात है. इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन भी इसी का पार्ट है कि और जो डिपार्टमेंट्स इंगेज कर रहे हैं वो कैसे हेल्प करें नॉर्मलाइज करने में कॉन्वर्सेशन. सो नॉर्म चेंज एक्चुअली is going to be a tough task and we have to learn more, but it's also probably the need of the hour. And finally, जो fourth theme था, which was actually also really important, जो आलोक सर ने बोला कि अब हमें थोड़ा पैराडाइम भी चेंज करने की आवश्यकता. अब हमें सेकंड ऑर्डर चीजों की बात करें तो प्रोग्राम तो चल रहा है और इम्प्रूवमेंट्स होंगे, बट अब हम उन चीजों की बात करें जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, उन सब थॉट्स के साथ, उन सब प्रोग्राम्स के साथ हम अपने फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स को कैसे एंगेज करें. सो दैट्स आल्सो अनदर important thing which we will probably need to think both in terms of programming and communication initiatives. And usme again PRI, SRLM, other institutions, intersectoral coordination ka bahut bada role hoga. So that's kind of a summary. It's probably very high level, but we can together come work on these and figure out very specific themes of working from this. So again I wanted to thank पैनलिस्ट, आज के सुबह के सेशन में जो लोग थे और अभी के सेशन में जो लोग हैं, आलोक सर से शुरू करके डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर रेनू, डॉक्टर रिंकू, डॉक्टर देवेंद्र, प्रवीणा जी, प्रदीप जी, पवन, स्निग्धा, रूपसी और आप सभी लोगों का कि ये हमने इफेक्टिव इंटरेक्शन किया आज लगभग आधा दिन का. और फाइनली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड ममता फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फैंटास्टिक इवेंट. Thank you so much.
मेधा मैम तो हम कॉमन थैंक क्यों कर रहे हैं अपनी तरफ से. So fantastic. Thank you so much. Thanks. Summarization, and I think it's a prelude to the WCD, which is on 26th, right? And Medha really pushed us to do it before WCD, and that's why it happened. And I think Kelina reminded me that I forgot to mention that this is right. So it's a prelude to this, and I hope we are able to carry on with this work as we go further, jointly, combinedly, and continue to support each other. Thank you very much. Thanks once again. Please join us for the lunch. Thank you very much. Thank you.